Hello everyone, welcome to Coding for Dev. So in this video, we can follow 14 plus essential DFA question problems in one shot. Okay, so in this we solve the basic array question, string question, fetching and sorting question that are mainly asked in DFA interview. So this is the list of all the questions we solved. Watch video till end so you can crack the DFA interview. Watch this video till the end. तो यह क्वेश्चन अरे टॉपिक के ऊपर है। इसका नाम क्वेश्चन का नाम है रिवर्स एन अरे। तो इसमें मेन हमारे को क्या रहता है, हमारे को इनपुट में एक अरे दिया जाता है, हमें उसको रिवर्स करना रहता है। जैसे अगर हमने इनपुट में दिया 1 2 3 5 4 5, देन आपको रिवर्स होकर 5 4 3 2 1 आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारी, इसको फॉलो करने की बहुत सारी अप्रोचेस रहती है, लेकिन सबसे पहले हम इसको जावास्क्रिप्ट में फॉलो कर रहे हैं। फिर हमारा जो पूरी प्लेलिस्ट है, इसमें हम जो भी क्वेश्चन फॉलो करेंगे उसको जावास्क्रिप्ट फॉलो करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में क्या कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तो वैसे तो अभी कभी इंटरव्यू में आप क्वेश्चन आस्क करते हैं तो हमें फिर इनबिल्ट फंक्शन फिर फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको इनबिल्ट फंक्शन पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमारे को एक वेरिएबल बना लेना है, इसमें हमारे को इनपुट दे देने हैं। लाइक हमने एक अरे बना लिया जिसमें हमने इनपुट दे दिए। उसके बाद हमारे को इस अरे के ऊपर हमारा फंक्शन लगाना है, देन इसको कंसोल लॉग कराना है। ये तो ये हमारा सिंपल, लाइक हमने इनपुट दिया, इनपुट को हमने रिवर्स फंक्शन से रिवर्स करवाया, देन इसको प्रिंट कर दिया। देखो हमने इनपुट 1 2 3 4 5 दिया था, ये रिवर्स हो गया है। लाइक ये तो मतलब बेसिक हमने इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके बनाया है। ठीक है, कभी भी हम इंटरव्यू क्वेश्चन में जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इंटरव्यू हमेशा मतलब हमसे मेन लॉजिक पूछ रहा है कि आपको फंक्शन का, इनबिल्ट फंक्शन का यूज नहीं करना, आपको खुद से फंक्शन लिखना है। तो इसका सबसे बेसिक अप्रोच से हम फॉलो करते हैं। तो अभी सबसे फर्स्ट क्या है, जैसे आपके पास एक अरे है तो आपको उसको रिवर्स करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट पहले एक अरे बनाएंगे। लाइक ये हम लूप के द्वारा फॉलो कर रहे हैं, यह ब्रूट फोर्स अप्रोच है। हम इसके बाद एक ऑप्टिमल अप्रोच भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस अप्रोच पे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को इनपुट लिख लेना है। एक हमने इनपुट लिख लिया, उसके बाद हमारे को एक और अरे बनाना है जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यू। इस पे ये हमारे को तो स्पेस लेगा, इसलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच है, क्योंकि इसमें ये हम दो वेरिएबल बना रहे हैं तो ये स्पेस ज़्यादा लेगा, लेकिन ये भी एक तरीका है। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो फिर हम एक फंक्शन बनाते हैं, अरे इसमें हम इनपुट लेंगे एक अरे, इसमें हम एक फॉर लूप लगाएंगे। लेट उसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे, उसकी लेंथ हम रखेंगे अरे की लेंथ के बराबर, और उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा लूप है। इस लूप में हम जो हमारा न्यू वेरिएबल है रिवर्स वाला, उसमें हम इफ लाइन पे फोकस करना, यही इसका मेन लॉजिकल लाइन है। लाइक इसमें हमने आई, लाइक इसमें जब भी हमारा जो वैल्यू आएगी, जैसे ही लूप चलेगा हमारा, तो हमारे जो न्यू वाले अरे इसमें हमारा लास्ट वाली वैल्यू स्टोर होगी। ऐसे ही लूप चलेगा, ये इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी, देन हमारा सेकेंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट, ऐसे वैल्यू हमारी होगी, और ये मतलब रिवर्स हो जाएगा टेक्निकली इस फंक्शन के चक्कर, इस फंक्शन से। तो एक बार हम इसको रन कराते थे, उसके बाद मैं समझाऊंगा ये वर्क कैसे करता है। तो हमने एडिटर कर लिया, कंसोल डॉट लॉग, लाइक हमने, मैं कोड लिख लिया, एक बार रन करा देता हूँ। लाइक बैक हमने हमारा इनपुट दिया था 1 2 3 4 5, देन हमने फिर रन करा, यह रिवर्स हो गया 5 4 3 2 1। इसमें मेन क्या है,
हमने 2 अरे बनाए, पहले अरे एक ARN नाम का अरे, एक अरे रिवर्स नाम का अरे। तो जो REV नाम का अरे है, इसमें हमने क्या करा, एक लूप रन करवाया, इस लूप रन करवाया, वो इसमें नए वाले लूप में हमने इसकी लेंथ जो कि आखिरी है उसको हमने लाइन में माइनस करवा दिया। देन जैसे ही हमारा लूप रन करेगा उसकी जो वैल्यू इंक्रीज होगी, देन हमारे जो लूप है इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी एलिमेंट है वो अपोजिट रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, वो न्यू वाले हमारे अरे में आ जाएंगे। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन इससे मेन क्या हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो यह एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है हमारा। तो इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है कि हम इसमें हम इन प्लेस, मतलब हमारा हमारे को न्यू वेरिएबल, न्यू अरे नहीं बनाना पड़े, हम उसी अरे में हम रिवर्स कर ले। तो इसके लिए हम एक दूसरी अप्रोच का यूज करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमारे को एक अरे बना लेना है, लाइक कोई हमारा सिंपल अरे जिसमें हमने इनपुट डाले। अब फंक्शन, ये फंक्शन बनाते हैं। देखिए इसमें भी हमने अरे को पास करा दिया है। अब इसमें हमें एक वेरिएबल बनाना है लेफ्ट नेम से, उसकी हमें वैल्यू दे देनी 0। एक हमें एक और वेरिएबल बनाना है लेट राइट। तो इसमें फर्स्ट वाले में उसकी इनिशियल वैल्यू देंगे जो कि 0 रहेगी, और इसमें हम इसकी लास्ट वाली वैल्यू देंगे कि हमारी लेंथ कितनी रहेगी। इसमें हमने लास्ट वाली वैल्यू दे दी। अब इसके बाद हमारे को लूप चलाना है। लाइक ये 2 पॉइंटर अप्रोच है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे एक वेरिएबल को इनिशियल में रखेंगे, दूसरे वेरिएबल को हमारे लास्ट में रखेंगे। उसके बाद क्या कराएंगे, हम दोनों को इंक्रीज कराएंगे। लाइक हम हमारा जो वेरिएबल रहेगा वो लेफ्ट साइड से भी इंक्रीज होगा, राइट साइड से भी इंक्रीज होगा, और जब वो दोनों सेम आ जाएंगे, जब हमारा लूप खत्म हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, तब जब हमारा लेफ्ट राइट से छोटा हो जाए तब हम आप लूप फिनिश कर दो, हमारा लूप वहां तक ही वर्क करेगा। तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट टेम्प, ये टेम्परेरी वेरिएबल बनाना है, उसमें लेफ्ट। लाइक ये हमारा जो ये वाला कोड भी काम कर रहा है, लेकिन अब ये कोड करता क्या है, जैसे इस कोड में हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बना रखा है लेफ्ट, एक वेरिएबल बना रखा है हमने राइट। हमने कंडीशन क्या लगाई, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है तब तक हमारा कोड वर्क करेगा। तो इसमें हमने करा क्या, हमने इसमें एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया है, उसमें हमने लेफ्ट की वैल्यू स्टोर कर दी है। ओके, नाउ हमने इसकी जो लेफ्ट की वैल्यू है उसको हमने राइट की वैल्यू में असाइन कर दी। लाइक हमारी जो लेफ्ट की वैल्यू है हमारी टेम्प वेरिएबल में है, वो हमारी जो
लेफ्ट वाली वैल्यू है उसमें हमने राइट की वैल्यू डाल दी है। देन हमने हमारी लेफ्ट में राइट वाली वैल्यू डाल दी है, उसके बाद हमने राइट वाले में हमने टेम्प की वैल्यू डाल दी जो वैल्यू हमारे टेम्प में पड़ी थी। तो अब हमने क्या करा, जैसे ही हमारा ये कोड ये टेम्प में वैल्यू आई, राइट वाले में टेम्प वाली वैल्यू आई, वैसे ही हमारा कोड क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा। जैसे ही हमारे लेफ्ट में राइट वाले वाले हमारा कोड क्या होगा, इंक्रीज होगा, और राइट से क्या होगा, माइनस होगा। तब माइनस नहीं होगा, एक बैक स्टेप आएगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हमारा कोड क्या इनिशियली शुरुआत से रन करेगा, वो हमारा जो राइट वाला है वो पीछे से बैक आएगा। देन इससे क्या होगा, हमारा अरे रिवर्स हो जाएगा। लाइक इस कोड को आप अगर आप समझ पा रहे हो, तो इसमें हमने क्या करा, ये टेम्प बनाई, मेन हमारा टेम्प का ही है कि टेम्प क्या कर रहा है, हमारी लेफ्ट वाली वैल्यू स्टोर कर रहा है। लेफ्ट वाली वैल्यू इसने स्टोर कर ली, तो जैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, ये इसकी जो वैल्यू है उसको स्टोर करता जाएगा और ये उसको राइट में पहुंचा देगा। और ये राइट वाला, और जब ये हमारा लेफ्ट राइट से छोटा होगा, तब हमारा जो अरे होगा वो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा और इसको हम प्रिंट कराते हैं तो ये अरे रिवर्स हो जाता है। तो ये इसकी ऑप्टिमल अप्रोच है। इस अप्रोच को बोलते हैं टू पॉइंटर अप्रोच। तो यह हमने इसमें देखा 3 अप्रोच देखी। सबसे पहले तो हमने एक इनबिल्ट फंक्शन से देखा कि इनबिल्ट फंक्शन से कैसे बनाते हैं। तो उससे हम डायरेक्ट एक फंक्शन यूज करा रिवर्स, उससे हमने रिवर्स कर लिया। दूसरा हमने देखा एक होल लूप का यूज करके देखा, जिससे हमने क्या करा, लेकिन इसमें हमने 2 वेरिएबल बनाए थे क्योंकि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी और ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या करा, टू पॉइंटर अप्रोच का यूज करा। तो इस क्वेश्चन का नाम है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट इन एन अरे। वो एक अरे में हमको उसका मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम जावास्क्रिप्ट पे फॉलो करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको जावास्क्रिप्ट पे फॉलो कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में क्या इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिससे हम किसी भी चीज़ को मतलब जल्दी इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके फॉलो कर सकते हैं। तो वैसे तो इंटरव्यू में हमें इनबिल्ट फंक्शन से फॉलो नहीं करना होता, हमें एक लॉजिकल सॉल्यूशन देना होता है, लेकिन आपको उसके इनबिल्ट फंक्शन क्या है वो भी पता होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम उसका इनबिल्ट फंक्शन से इस क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मतलब सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमें एक अरे दिया जाएगा, अरे में कुछ एलिमेंट दिए जाएंगे, हमको उस अरे में से उसका मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट दोनों बताने हैं। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। तो अब हम आते हैं, तो सबसे पहले हम इनबिल्ट फंक्शन से फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं अरे नेम पे, उसमें हम कुछ एलिमेंट डाल देंगे 3, 5, 1, 8, -2, 0। ये हमने एलिमेंट डाल दिए। अब इसका हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन में हमने अरे पास करा। अब इसमें हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ AR डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। अगर उसकी लेंथ अगर 0 हुई तो फिर तो मतलब हमें पता चल गया कि इस पे कुछ है ही नहीं, रिटर्न नल कर दो आप। देन इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे मेक्स वाला, कॉन्स्ट मेक। इसमें सिंपल हमने नॉर्मल कि हमारा जो मेक वेरिएबल है उसको फाइंड करो। तो एक नॉर्मली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है मैक्स नाम पे, तो लाइक मैथ डॉट मैक्स। इसमें हमारे अरे की वैल्यू पास कर देंगे। ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट पे, इससे हमारी जितनी वैल्यू है वो इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। देन हम एक और बनाएंगे, राइट, इसको हम स्मॉल कर देते ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट मिन। इसमें भी हम हमारा फंक्शन का यूज़ करते हैं और इसमें हम टाइप यूज़ कर लिया। इसमें हम रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम मैक्स और मिन की वैल्यू, मैक्स मिन। ये हमने रिटर्न कर दिया।
देन हम इसको कंसोल लॉग करना है, इसको कंसोल लॉग, इसमें हम हमारा अरे पास कर देंगे। ओके, अब इसको रन करते हैं फंक्शन को। देखो हमने फंक्शन को रन किया, इसमें मेक वैल्यू आ गई 8, मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी -2। तो ये देखो हमारा कोड अच्छे पे वर्क कर गया है। अब कोड में अपने सिंपल कुछ नहीं करा, हमने डायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करा जो होता है मैथ डॉट मैथ। इसमें हमने वैल्यू डाली अरे की सारी, इसने हमारे को एक मैक्स वैल्यू स्टोर कर ली। मेन फंक्शन में मैथ डॉट मेन करा, इसने मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिक फाइंड कर ली और हमने उसको रिटर्न करके प्रिंट करा दिया। इसमें हमने इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करा। लेकिन अब हम करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो जिससे हम लॉजिकल सॉल्यूशन देंगे। तो उसका जो सबसे पहला है, इसको हम फोर्टिंग की वजह से करेंगे। फोर्टिंग के फिर जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोड लिख लेते हैं, सबसे पहले इनपुट लिख लेते हैं हमारे। तो कॉन्स्ट हमारे इनपुट वही लिख लेते हैं जो भी लिखे थे हमने, 3 5 1 8 क्या था, -2 0। ओके, हमने वही इनपुट लिख लिया हमारे। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फोर्टिंग कर देंगे, फोर्ट कर देंगे सारे एलिमेंट्स। तो हम फोर्ट कर देते, फिर पहले हमारी वही हमारी जो कंडीशन हमने दी थी, जो अपनी पिछले बार में दी थी, वो दे देते, क्योंकि उससे क्या हमारा मतलब कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेंथ 0 होगी तो रिटर्न कर देना नल, रिटर्न क्या रहे, हाँ ठीक है, रिटर्न कर देना नल। और इसके बाद हमने क्या करा, ए आप पे फोर्ट डाल दिया। फोर्ट कैसे करना है कि भी हम बता देते हैं। ये हमने फोर्ट कर दिया इसको, ये हमने फोर्ट। अब हमने फोर्ट करने के बाद क्या होगा, हमें पता है कि ये जो वेरिएबल हमने दिए फोर्ट हो गए, तो इसका जो पहली वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, मिनिमम होगा, और जो आखिरी वैल्यू होगी सबसे मैक्सिमम होगी। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको रिटर्न कर देते हैं। तो रिटर्न, अरे हमने एक हम गलती कर बैठे, हमने इसको एक फंक्शन में लिखना चाहिए हमारे। तो पहले फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फाइन मैक्स मिन, इसमें हमने अरे पास कर दिया। ये ये हमने वैल्यू डाल दी, इसमें हमने रिटर्न क्या करा, मैक्स। मैक्स में क्या रिटर्न करेंगे हम, जो वैल्यू सबसे आखिरी में रहेगी, डॉट लेंथ -1, इसमें हमारी सबसे आखिरी वाली वैल्यू देगा, और मिन में हमारी इनिशियल वैल्यू। अब इसको हम कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग्स साइन मिन मैक्स, मैक्स मिन सॉरी है यार। देन ये, देन इस कोड को हम रन करेंगे। जैसे हमने इसको रन करा, इसकी वैल्यू आई, मैक्सिमम वैल्यू आई हमारी 8 और मिनिमम वैल्यू आई हमारी -2। तो इसमें हमने क्या करा, सबको ने इनपुट लिया, इनपुट को हमने फोर्ट कर दिया। फोर्ट करने के बाद हमें पता है कि जो इनिशियल वैल्यू होगी शुरुआत वाली वो हमारी मिनिमम होगी, जो आखिरी वाली वैल्यू होगी वो हमारी मिनिमम। तो हमने डायरेक्ट उसको रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसके अलावा हमारी एक और अप्रोच है जो कि ऑप्टिमल अप्रोच है, जिससे हम फाइंड मिन मैक्स फाइंड कर सकते हैं। उसका नाम है लीनियर स्केल मेथड, ठीक है। तो फिर इस मेथड को बता देते हैं। उस मेथड में हमें क्या करना होता है, पहले हम अरे वही हमारा लिख लेते, बैक कर लेते हुआ, वही हमारा जो वैल्यू है इनपुट है वो ले लिया हमने। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया, वही फाइंड मिन मैक्स, इस पर हमने अरे पास करा। देन इसमें हम सबसे वही हमारी जो सेम कंडीशन जो हम यूज करते आ रहे, मैं बार बार कोड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप क्लियर रहे कि कोड सारा सेम ही है, हमें बस कुछ कुछ लॉजिक चेंज करने हैं इसमें। ओके,
तो ये इसके बाद होने पर रिटर्न नल। अब यहाँ तक का कोड हमारा सेम है जो हमने अभी तक सभी में यूज करा है। अब मेन हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो नए वेरिएबल बना रहे हैं। एक हमने बनाना है मैक्स का वेरिएबल, उसमें इनिशियली वैल्यू रहेगी हमारी जो हमारा रहेगा, और एक बनाना है मिन वेरिएबल जिसमें अरे की 0 इंडेक्स वाली वैल्यू रहेगी, इसको हमने स्पेस देने में बोल गए। ओके, दो वेरिएबल। अब हमें एक फोर लूप चलाना है। हमने फोर लूप चलाया, हमने उसको चलाया इनिशियली 0 पे, उसकी लेंथ रहेगी हमारी कितनी, हमारे अरे की लेंथ है, वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, हमारा अरे इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें हमने कंडीशन रखेंगे हम हमारी कि इफ अगर हमारे अरे की जो पहले इंडेक्स वैल्यू है अगर वो मैक्स से बड़ी रही तो हमने उसको मैक्स में स्टोर कर लेना है। ओके, और इफ अगर हमारे अरे की वैल्यू मिन से छोटी रही तो उसको हमारे को मिन में स्टोर कर लेना है। उसके बाद हमारे को दोनों को रिटर्न कर देना है। तो हमने रिटर्न करा मिन मैक्स, मैक्स मिन कुछ भी कर सकते हैं। ये हमने उनको करा। इसके बाद हमारे को इसको रन करना है फंक्शन को, तो इसको प्रिंट करा देते हैं। फाइंड मैक्स मिन एरर। तो अब हम इस कोड को रन करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने आई लिखना था। ओके, मैंने कोड रन करा। ये देखो हमारी, ये हमने आगे पीछे कर लिया था यहाँ पे। ये जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, ये हमने रिटर्न कर दी दोनों वैल्यू। तो हमारा मैक्स है 8 और मिन है हमारा। अब इसमें हम इसमें कोड में क्या करा हमने, हमने इसमें दो नए वेरिएबल बनाया, एक मैक्स वेरिएबल बनाया जिसमें इनिशियली वैल्यू तो वो रहेगी, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे एक नया लूप चलाया इसमें इस कंडीशन में लगाई मैक्स वैल्यू, तो जो एक बार जो मैक्स वैल्यू आ जाएगी वो बार बार उसी सेम जितने भी एलिमेंट्स रहेगी उससे कंपेयर होंगी। तो एट द एंड फाइनली मैक्स में कौन सी वाली वैल्यू रहेगी, जो सबसे बड़ी रहेगी। तो उसी को हमने मैक्स में स्टोर कर लिया है, जो हमारी हर बार आएगी वैल्यू, और जो एट द एंड लास्ट में हमारी वैल्यू रहेगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और फिर इसी प्रकार हमारी मिनिमम में, जो हमारी फाइनल में जब तक कंपेयर होकर जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो मिनिमम ही रहेगी। तो हमने ये दो कंडीशन लगाई और उन दोनों कंडीशन की वैल्यू हमने दो नए वेरिएबल में स्टोर करी और उसी को हमने रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है। इस वीडियो में हमें उसको सेकेंड इफ माइनस तो सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको सेकेंड इफ माइनस सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है। तो हमारे को जैसे इनपुट में 51925 दिया जाएगा, तो हमारे को जैसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है, सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है 2, तो ये यहाँ पे आउटपुट में 2 आ रहा है। सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट यहाँ पे 5 और लार्जेस्ट एलिमेंट 9। तो हमारे को कोड को इस तरह लॉजिक लिखना है कि हम यह आउटपुट ला पाए। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक बिल्ट इन मेथड बताई थी आपको। बिल्ट इन मेथड वो होती है जो हमारे को, जैसे हम इस क्वेश्चन को हम जावास्क्रिप्ट पे सोल्व करने वाले हैं, तो बिल्ट इन मेथड क्या होता है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन बिल्ट फंक्शन का यूज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि ईजी रहता है। लेकिन जब भी हम इंटरव्यू देते हैं हमारे को बिल्ट इन फंक्शन का यूज नहीं करना होता, हमारे को उसका मेन लॉजिक लिखना होता है। लेकिन आपको बिल्ट इन फंक्शन भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बिल्ट इन फंक्शन की मदद से ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं एडिटर पे। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ डॉट मेन फंक्शन प्री बिल्ट फंक्शन का यूज किया था वो क्वेश्चन, इसमें भी हम उसी का यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमारा लॉजिक थोड़ा सा अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम इसमें हमारे इनपुट दे देते हैं। कॉन्स्ट, हमने अरे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वो ARR होता है, लेकिन मैं उसको अरे बोलता हूँ। 5192 5
1। इसमें हमने जानबूझकर 2 एलिमेंट दिए, सेम एलिमेंट दिए हैं, जैसे 5 को हमने रिपीट किया है, लेकिन इसका भी हम लॉजिक लिखेंगे ताकि, क्योंकि ये लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो हमने एक इनपुट एलिमेंट बना लिया है, अब हमारे को उसका फंक्शन लिखना है। फंक्शन सेकेंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, ये हमने फंक्शन बना लिया। अब इसमें हमने इनपुट दिया अरे। अब इसमें क्या करना, हमने जो पिछले वाले एलिमेंट में करा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने करा था, हमने क्या करा था, पहले से कुछ जो चीज़ें दी थी उन्हें पहले से हमने रिटर्न कर दिया था। लेकिन इस वाले में हम क्या करेंगे, पहले उसको एक नए वेरिएबल में डाल देंगे सारी वैल्यूज को। तो पहले एक फिर यूनिक नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, यूनिक। हमने एक न्यू को इसमें फेड कर दिया। फेड करने से क्या होगा, जैसे हमने इसमें फेड का यूज़ करा, फेड करने से जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएंगे। इसमें जैसे हमने 5 को डुप्लीकेट करा है, 1 को डुप्लीकेट करा है। अब इसमें हम पहले जो एलिमेंट मतलब 1 और 2 से छोटा है, उसका सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 2 एलिमेंट है, 2 से छोटे वाले एलिमेंट ना। तो हम पहले उनको रिमूव कर देते हैं। तो हमने सारी वैल्यू हमारी यूनिक के अंदर आ गई है। तो यूनिक में लेंथ, अगर इसमें लेंथ अगर इसके 2 से छोटी रहेगी तो हम नल रिटर्न कर देंगे। पिछले वाले में हमने लेस देन 1 करा था, क्योंकि इस बार हम सेकेंड स्मॉलेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो हम लेस देन 2 करेंगे। आप अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि वो पहले वो मेन कॉन्सेप्ट है, ये उसका फिर डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट मैक्स, और इसमें हम हमारा फंक्शन लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स, और इस फंक्शन में हम हमारी यूनिक की वैल्यू स्प्रेड कर देंगे। एक और फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट मिन, इसमें भी यूनिक की वैल्यू स्प्रेड कर देंगे हम। अब हमारे को क्या करना है, इसमें जो हमारे पास मैक्स और मिन वैल्यू है उसको हमारे यूनिक वाले अरे में से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे को मैक्स मिन फाइंड करना है। लेकिन ये जो अभी मैक्स मिन है इसको हमारे अरे में रिमूव कर देंगे। जिससे पहले वो करते उसके बाद मैं आपको बताऊं हमें क्या करना है। पहले मैं कर देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। यूनिक डॉट स्प्लाइस, यूनिक डॉट इंडेक्स ऑफ मिन। हमने इसमें से जिस इंडेक्स पे हमारा मिन वैल्यू थी उस पे से हमने कहा कि आप ये वाली वैल्यू को रिमूव कर दो। ये हमने मैक्स रिमूव मिन वैल्यू रिमूव कर दी। फिर इस प्रकार से हम इसी का यूज कर लेते हैं, इंडेक्स ऑफ मैक्स मैक्स रिमूव कर दिया। अब देखो हमारे जो यूनिक वेरिएबल है उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सबसे पहले हमने फाइंड कर ली, और उसके बाद हमको अरे में से हमने उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों रिमूव कर दी। अब हम इसमें वापस सेम करेंगे, क्योंकि अब केवल इसकी सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है। फर्स्ट वाली हमने मैक्सिमम मिनिमम लेके दोनों को स्प्लाइस का यूज करके रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वापस हमारा मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे। जो अरे में जो बचे हुए एलिमेंट है उसमें से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पिछले वाले रिमूव होने के बाद। तो उनका भी नाम देते कॉन्स्ट सेकेंड मैक्स। इसमें भी हमारा सेम फंक्शन हम लगाएंगे मैथ डॉट मैक्स। इसमें भी यूनिक
इसको हमने स्प्लिट कर दिया, कॉस्ट सेकंड मिन विच डॉट मिन यूनिक। अब इसमें हम रिटर्न कर देंगे जो हमारी वैल्यू है, रिटर्न सेकंड स्मॉलेस्ट, क्या है हमारा सेकंड मिन, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड मैक्स। हमारा कोड रन कर लेते हैं। पहले फंक्शन को हमारे को रन करना पड़ेगा, console डॉट लॉग सेकंड लार्जेस्ट, इसमें हमारा अरे पास कर देंगे, देन इसको प्रिंट। देखो जो हमारा इनपुट था उसमें 1 हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट था और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था हमारा 2, तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया हमारा, और हमारा 9 लार्जेस्ट एलिमेंट था और इसमें सेकंड लार्जेस्ट था हमारा 5, तो 5 आ गए। तो ये थी बिल्ट इन मेथड। इसमें हमने क्या, सबसे पहले एक बार मैं आपको पूरा कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करा, हमने इनपुट लिया, इनपुट में हमने एक फंक्शन लगाया, फंक्शन में क्या करा हमने, जो अरे की वैल्यू थी वो हमने एक यूनिक नाम के नए वेरिएबल में स्टोर करी। साथ में हमने इसको क्या करा, फेड करा। फेड करने से क्या होगा, इसमें जो डुप्लीकेट एलिमेंट थे हमारे अरे में से वो सारे रिमूव हो गए। उसके बाद हमने हमारी कंडीशन लगाई कि अगर वेरिएबल 2 एलिमेंट से जस्ट छोटा होगा तो वो आप उसको नल कर देता, क्योंकि 2 एलिमेंट्स छोटे में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट हम फाइंड कर ही नहीं सकते, तो हमने उसको रिटर्न नल कर दिया। उसके बाद हमको क्या, मैक्सिमम, सबसे पहले हमारे को सेकंड लार्जेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो हमने हमारा कोड लगाया, मैथ डॉट मैक्स का फंक्शन लगाया, इसमें यूनिक वैल्यू को हमने स्प्लिट करा और हमारा मैक्स और मिन आ गया हमारे पास। फिर हमने क्या करा, एक और जावास्क्रिप्ट फंक्शन होता है स्प्लाइस, जब हमने यूनिक उस अरे पे स्प्लाइस लगाया। स्प्लाइस में हमने इंडेक्स कौन सा दिया, जिस इंडेक्स पे हमारे मिन मैक्स फाइंड हुए थे, और उसमें हमने 1 करा ताकि केवल वो वाला एलिमेंट रिमूव हो। तो हमने हमारे यूनिक अरे में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रिमूव कर दी। उसके बाद फिर हमने सेकेंड मैक्स मिन 2 वेरिएबल बनाए और उसमें हमने वापस हमारा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करा। जो अब जो एलिमेंट बचे होंगे वो हमारे सेकेंड लार्जेस्ट और सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो गए, और दोनों को हमने रिटर्न कर दिया। ये थी इनबिल्ट मेथड जो कि हमने जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यूज करा है। अब इसकी एक और मेथड है जो कि ब्रूट फोर्स मेथड है, तो उससे करेंगे हम फुल क्वेश्चन। जैसे कभी भी इंटरव्यू पूछेगा आपको, तो आपको ये वाली मेथड से कर सकते हो, लेकिन वो बोलेगा कि आप मेरे को लॉजिक वाला कोड बताओ, फंक्शंस का यूज मत करो। तो आप जो मैं मेथड बताऊंगा वो यूज करना। वो ब्रूट फोर्स मेथड है, एक और ऑप्टिमाइज मेथड भी है, लेकिन पहले हम ब्रूट फोर्स मेथड कर लेते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड में क्या है, हमारा इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। इसमें भी हम सेम उसी प्रकार से जो पिछले में हमने नंबर दिए थे, जैसे अरे 5 1 9 2 5 1, इसको हम फॉलो करेंगे फोर्टिंग की मदद से, फोर्टिंग का यूज करके। इसमें हमने इनपुट ले लिया, अब हम हमारा फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन वही सेकंड लार्जेस्ट जस्ट, ये क्या हो रहा, मोलेस्ट, ये क्या हो रहा रिपोर्ट। हाँ, इसमें हमने अरे पास करा, फंक्शन बनाया। अब इसमें सबसे पहले हम इसको एक यूनिक नाम के वेरिएबल में लिख लेते हैं, यूनिक न्यू
फिट करा हमने इसको अरे को, अब इसको हमने फिट तो कर लिया इसको, लेकिन हमें इसको फोर्ट भी करना है। क्यों? क्योंकि इससे हमने क्या करा, केवल डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, इसको पीछे हम इसको फोर्ट कर देंगे, इसमें जितने भी एलिमेंट थे हमारे फोर्ट कर देंगे। तो फोर्ट कर लेते हैं, ए बी माइनस बी, ये हमने इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी रिमूव कर दिया और इसको फोर्ट भी कर दिया। जैसे हमारा इनपुट क्या था, अरे था, उसको हमने यूनिक नाम के वेरिएबल में डाल दिया, फोर्ट भी कर दिया और उसके डुप्लीकेट भी रिमूव कर दिया। अब हमारी पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर यूनिक की लेंथ 2 से छोटी होगी तो फिर रिटर्न नल कर देना, 2 से छोटी हुई तो रिटर्न नल कर देना। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फोर्ट पहले से कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किस वेरिएबल पे क्या है। जो हमारा 0 इंडेक्स है उस पर हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और 1 इंडेक्स पे हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट सेकंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू जो यूनिक के 1 इंडेक्स पे होगा वो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। कॉन्स्ट सेकंड लार्जेस्ट, अब हमारे जो लास्ट पे जो एलिमेंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, लार्जेस्ट, और उसका सेकंड लास्ट होगा हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यूनिक डॉट लेंथ में से हम 2 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा कौन सा होगा, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। इन दोनों को हम रिटर्न कर देंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट कर दे पहले, स्मॉलेस्ट सेकंड लार्जेस्ट। ये हमारा, एक बार कोड में रन करा देता हूँ। अब इसको हमने प्रिंट नहीं करा, कंसोल डॉट लॉग सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इसमें हमने अरे पास कर दिया, ये हो गया कोड। ये हमारा आंसर हो गया, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा 2 है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट 5 है। एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने इनपुट लिया अरे, उसमें हमने एक फंक्शन बनाया, हमारा फंक्शन में हमने एक और नया वेरिएबल डिक्लेयर किया यूनिक नाम पे। यूनिक में हमने क्या करा, उसको फिट करा, फिट करने से क्या हुआ, हमारी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू थी, जब 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, वो रिमूव हो गया। उसके बाद हमने इसको फोर्ट करा, फोर्ट करने से क्या होगा, सारी वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। तो अब हमारे इसमें केवल अरेंज भी हो गई, फोर्ट भी हो गया। अब हमारा एक जो अरे है वो अरेंज हो गया है, तो हमें पता है जो कि पहली वाली वैल्यू होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, लास्ट वाली वैल्यू होगी लार्जेस्ट होगी। लेकिन फिर हमने क्या करा है, एक वेरिएबल बना लिया। पहले हमने एक हमारी और फिर कंडीशन लगा दी कि अगर 2 से छोटा एलिमेंट होगा तो उसको नल कर देना, तो उसका कोई आंसर आएगा ही नहीं। उसके बाद हमने सेकंड स्मॉलेस्ट वाला बनाया, हमें पता है 0 इंडेक्स पे हमारी स्टार्टिंग होती है, तो हमने 1 वाला इंडेक्स पे यूनिक पे हमको उसको क्या बोला, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। और हमें पता है लास्ट पे सेकंड वाला हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो हमने यूनिक में इसमें माइनस करा, -2 कर दिया, हमें पता है ये सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, और दोनों को हमने रिटर्न कर दिया और उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो ये थी हमारी ब्रूट फोर्स मेथड। ये मतलब मेथड अच्छी है, आपको इंटरव्यू को बैठ सकते हैं, लेकिन एक ऑप्टिमाइज मेथड नहीं है। इसमें हमने फोर्टिंग का यूज करा है और इसमें हमने ये मतलब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, तो इससे भी एक एफिशिएंट सॉल्यूशन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फाइनल हमारा इनपुट तो सेम ही है दोनों में, तो इनपुट चेंज करने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसका जो हम फंक्शन लिखते हैं, सब पहले फंक्शन सेकंड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, इसमें हमने अरे पास कर दिया। अभी मैं क्या करना, सबसे पहले हम मैक्स डिक्लेयर कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, सेकंड मैक्सिमम, वो लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं, मिनिमम भी बोल सकते हैं। तो हमने लेट
मैक्स डिक्लेयर करा और इसको क्या रखा हमने, इन्फिनिटी। और सेकेंड मैक्सिमम को दे इन्फिनिटी इन दैट। अब हम दो वेरिएबल है, हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हमारे, जिसे हमने, अब बोलोगे कि हमने इसमें मैक्सिमम वाले में माइनस इन्फिनिटी क्यों रखा है और मिनिमम वाले में हमने इन्फिनिटी क्यों रखा है। तो इसमें माइनस इन्फिनिटी रखा है ताकि मतलब इसका जो कंपेरिजन होगा मैक्सिमम का, वो बिल्कुल सबसे लोवेस्ट से भी लोवेस्ट से होगा, कंपेरिजन माइनस इन्फिनिटी से होगा। और जो मिनिमम का कंपेरिजन मैक्सिमम से मैक्सिमम एलिमेंट से होगा। इससे क्या होगा, हमें मतलब कंपेरिजन में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम एक लूप चलाते हैं, फॉर लेट नम ऑफ अरेज। तो हमने जितनी भी वैल्यू थी हमारी वो अरे में आ गई है। इसके बाद हमारे को क्या, हमारी कंडीशन लगा ली, इफ कंडीशन, इफ अगर हमारा नम है वो मैक्स से बड़ा हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू हम सेकेंड मैक्स में स्टोर कर लेंगे। सेकेंड मैक्स में हम मैक्स की वैल्यू स्टोर कर लेंगे अगर नम हमारा मैक्स से बड़ा हुआ। ओके, तो मैक्स से इक्वल टू हम क्या कर देंगे, नम। ये हमने कंडीशन लगाई। एल्स में हमने कंडीशन लगाई, एल्स इस कि हमारा जो नम है, नम अगर वो सेकेंड मैक्स में बड़ा होगा, से बड़ा है, एंड और अगर वो पहले वाले से इक्वल भी नहीं है, पहले से कुछ शुरुआत में हमने क्या करा, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करी। अब सेकेंड एक्स वाली कंडीशन में कहते हैं जो मैक्स है सेकेंड मैक्स से बड़ा है अगर नम, और वो उसके इक्वल भी नहीं है मैक्स के हमारे, तो उसको हम किस में स्टोर करेंगे, सेकेंड मैक्स में। सेकेंड मैक्स में हमने नम स्टोर कर लिया। ये था हमारा कोड फॉर मैक्सिमम, सेकेंड मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। अब हम एक और कोड लिखेंगे, जो कि लिखेंगे हम, ये फोर यहाँ पे चल रहा है कोड, हाँ यहाँ पे, ये अरे हमारा उस लिए था मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। इसमें हम एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ नम, पहले मैं कोड लिखता हूँ, वो कोड समझाऊंगा। नम लेस देन मिन, सेकेंड मिन इज इक्वल टू मिन, मिन इज इक्वल टू नम। इसमें सबसे पहले हमने मिनिमम फाइंड करा उसका, और एल्स इस, अब हम सेकेंड मिन फाइंड करेंगे हमारा, कि जो नम है लेस देन है अगर सेकेंड मिन पे, और अगर वो मिन के इक्वल भी नहीं है, मिन के इक्वल भी नहीं है, तो जो सेकेंड मिन की वैल्यू है वो क्या है, नम। मैक्सिमम फाइंड कर लिया, मिनिमम फाइंड कर लिया। अब ये हमारा कोड हो गया, इसको हम रिटर्न कर सकते हैं, तो इसलिए इसको रिटर्न कर देता हूँ। डायरेक्ट रिटर्न कर देते हैं अपन, सेकेंड मिन सेकेंड मैक्स। ओके, कंसोल लॉग फाइंड
तो आपने देखा इस कोड को, जैसे आपने देखा यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई, सेकंड मिन और सेकंड मैक्स वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई है। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें हुआ क्या, कोड वर्क कैसे करा। सबसे पहले क्या करा, हमने एक इनपुट बनाया अरे। अरे में पहले हमने 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, मैक्स, मैक्स, मिन, सेकंड मिन। उसके बाद हमने सबसे पहले एक फॉर लूप लगाया। फॉर लूप क्या करा, जितनी भी हमारी वैल्यू है वो सारी नम में स्टोर हो गई। ओके, उसके बाद हमने पहली इस कंडीशन लगाई, ये गाय के लिए फाइन, ये फाइन मैक्स और सेकंड मैक्स फाइन करने के लिए बनाई अपन, ठीक है। सेकंड मैक्स फाइन करने के लिए बनाया। इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले नम से हमने मैक्स को कंपेयर करा कि अगर नम हमारा मैक्स से बड़ा होगा, अगर मैक्सिमम से बड़ा होगा, अभी मैक्सिमम में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कंपेयर होगा तो मैक्स में हमारी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ग्रेटर देन वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इसने बोला कि अगर नम हमारा मैक्स से बड़ा हुआ तो इस लूप को चलाओ, तो सेकंड मैक्स है ना, उसमें हम मैक्स स्टोर कर लेंगे। मैक्स हमारा स्टोर हो गया, उसके बाद मैक्स में हम नम स्टोर कर लेंगे, लेकिन जब मैक्स से भी बड़ा होगा तभी हमारा लूप चलेगा, तो वो मैक्स वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने एल्स इस कंडीशन में हमने क्या करा कि नम, इसमें हमारी मैक्स वाली वैल्यू नहीं आई, इसमें जो वैल्यू सेकंड मैक्स से बड़ी है और जो मैक्स के इक्वल ना हो, और मैक्स को हमने हटा दिया, वो हमारी सेकंड मैक्स में स्टोर हो जाएगी। ओके, तो इससे पहले हमने मैक्स फाइंड करा, सेकंड मैक्स फाइंड करा, तो ये हमारा यहाँ इसको फाइंड करने के लिए था। अब सेम इसी प्रकार ये मिनिमम को फाइंड करने के हमने बोला जो नम पे छोटा होगा वो सेकंड मिन में स्टोर हो जाएगा, और वो वही हमारा मिन में स्टोर होगा, मिन में तो हमारा सबसे छोटा वाला स्टोर हो जाएगा। तो एल्स इस कंडीशन में हमने सेम सेकंड मिन फाइंड करने के लिए हमने इसमें मिन को एलिमिनेट कर दिया। हमने एंड ऑपरेटर लगा के बोला कि मिन नहीं आना चाहिए, तो अगली बार जब लूप चलेगा तो इसमें सेकंड मिन आएगा। तो हमने दोनों सेकंड मैक्स सेकंड मिन दोनों ले ली और दोनों को हमने रिटर्न कर दिया और दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। तो ये हमारी ऑप्टिमल अप्रोच थी। अगर इंटरव्यू आपसे पूछे कि आपको ऑप्टिमल अप्रोच बतानी है तो सबसे बेस्ट अप्रोच है इसको फाइंड करने की। इस क्वेश्चन का नाम है चेक इफ द अरे फोर्टेड और नोट। अगर वो फोर्टेड है तो असेंडिंग ऑर्डर में फोर्टेड है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में फोर्टेड है। अगर फोर्टेड नहीं है तो हमें उस तरह के उसके से प्रिंट करना है। तो हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके जैसे इनपुट्स में हमारे को जैसे ये इनपुट दिया गया है 1 2 3 4, अगर ये फोर्टेड है तो असेंडिंग ऑर्डर में फोर्टेड है। अगर ये फोर्टेड डिफेंडिंग ऑर्डर में तो हमें लिखना है डिफेंडिंग ऑर्डर में फोर्टेड है। अगर ये फोर्टेड नहीं है तो हमें लिखना है नॉट फोर्टेड है। तो इसको हमें डिफरेंट मेथड से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम बिल्ट इन मेथड से फॉलो करेंगे इसको। तो चलो चलते हैं VS कोड के ऊपर। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं कि अरे फोर्टेड है कि नहीं। इफ फोर्टेड, इसमें हम अरे पास कर देते। अभी हमने अरे बनाया नहीं है, हम अभी हमने पास कर दिया अरे। जब हम कंसोल लॉग में प्रिंट करेंगे इसमें, क्योंकि हमारे 2 3 इनपुट देंगे, अलग अलग इनपुट देके चेक करेंगे, इसलिए अभी हमने इनपुट बनाया नहीं, हम उसको लास्ट में बनाएंगे। तो पहले फंक्शन लिखते हैं। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं असेंडिंग नेम से, और इस पे हम जो अरे की इनबिल्ट फंक्शन यूज करेंगे वो है एवरी फंक्शन। इस फंक्शन में इसमें जो हम कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन पास नहीं हुई तो यह कोड नहीं चलेगा। तो जैसे हमने इसमें वैल्यू दी, ये इसमें हम फिर 2 वेरिएबल का इनपुट देते हैं, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे। पहली कंडीशन रहेगी कि हमारा जो आई है वह 0 के इक्वल है, और जो अरे से एक पिछला वाला एलिमेंट है अगर वो वैल्यू से छोटा है, तो हमने पहली कंडीशन में क्या लगाई कि अगर वो इसके इक्वल है और अगर वो वैल्यू से छोटा है, इसमें हमने इसको वैल्यू नाम देना है इसका, तो वो असेंडिंग होगा। सेम इसी तरह से हम डिफेंडिंग के लिए बनाते हैं। इसमें भी हमने सेम अरे डॉट एवरी वेल दिया, इंडेक्स दिया हमने उसका। इसमें भी हमने कंडीशन लगाई अगर आई 0 होगा, और अगर अरे आई से अगर एक इनपुट छोटा होगा, और अगर वेल से लेस देन होगा, तो हमने इसमें हमने लेस देन लगाया है।
तो इसमें हमें ग्रेटर देन लगाना है। पिछले वाले में हमने क्या लगाया था, लेस देन। अगर वो उससे बड़ा हुआ तो हम इसको डिफेंडिंग ऑर्डर में बनेंगे, तो वो कंडीशन हमारी पास नहीं होगी। तो इसको अब हम प्रिंट करते हैं। इफ अगर हमारी इसमें इसमें से दो वैल्यू रिटर्न होती है, अगर ये कंडीशन पास हुई तो ट्रू वैल्यू होगी, वरना फॉल्स होगा। तो हम इसमें इसको चेक करते हैं। हमने असेंडिंग करा और इसमें हम कंडीशन लगा दें। अगर ये कंडीशन असेंडिंग हुआ, अगर वैल्यू 2 आई हमारी, तो आप क्या रिटर्न करना कि फोर्टेड है ये अरे, फोर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर इसी तरह अपन डिफेंडिंग के लिए रिटर्न फोर्टेड इन डिफेंडिंग ऑर्डर। ओके, इसको रिटर्न कर देते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन पास नहीं हुई तो हमें प्रिंट करना है नॉट फोर्टेड। तो ये हमारा फंक्शन बन चुका है। अब इसमें हम टेस्ट केस एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हमारे तीनों टेस्ट केस चेक कर लेते हैं। पहले टेस्ट केस है हमारा कॉन्फोर डॉट लॉग करा हमने, हमारा फंक्शन लगाया। इसमें अब इनपुट हमारे देंगे हम 1 2 3 4 5, ये हमारा इनपुट है। तो अब इसमें कोड रन करेंगे तो देखो हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। ये कोड कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर। अब सेकंड टेस्ट हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए करते हैं हम। इसी को ले लेते हैं, टेस्ट 2 फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हम इनपुट उल्टे पास कर देते हैं, 5 4 3 2 1। जो पहले वाला है उसने हमें असेंडिंग रिटर्न करा, दूसरे वाले ने हमें डिसेंडिंग रिटर्न करा। फिर हम एक और अरे बना देते हैं जिसमें हम वैल्यू को आगे पीछे कर देंगे। 1 2 3। ओके, ये हमारा आखिरी वाला नोट सॉर्टेड है। देखो हमने हमारा फंक्शन लिखा, हमने हमारे तीनों टेस्ट केस भी पास हो गए। अब एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्या करा, हमने एक फंक्शन बनाया, असेंडिंग नाम का एक फंक्शन बनाया इफ सॉर्टेड नेम से। उसमें हमने पहला हमारा वेरिएबल बनाया असेंडिंग नेम से, उसमें हमने एवरी डॉट एवरी का फंक्शन का यूज करा। ये एक इनबिल्ट मेथड फंक्शन है। इसमें क्या होता है, जो हम वैल्यू देते हैं, जो वेल है उससे हमारी जितने भी अरे की वैल्यू रहेगी, वेल में रहेगी आई वहाँ कहाँ तक रन करेगा। तो अगर आई 0 0 है, अगर वैल्यू उसमें 0 है इनपुट, तो कोड फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर वो इससे छोटा है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये इससे बड़ा रहता है तो हमारा ट्रू रिटर्न करता है। इस कारण हमारी जो कंडीशन है ये वाली, ये रन करती है। सेम हमने यही डिफेंडिंग के लिए करा। और अगर ये दोनों कंडीशन अगर पास नहीं होगी तो हम क्या प्रिंट करेंगे, नॉट फोर्टेड। तो ये हमने उसको तीनों टेस्ट केस में पास भी कर लिया। ये बिल्ट इन मेथड थी। अब इसके अलावा इसमें एक और मेथड होती है, हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। जैसे ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, इसका हम यूज़ नहीं करते। हम कभी भी इंटरव्यू हमारे से क्वेश्चन पूछता है तो हम सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स मेथड बताते हैं, फिर हम उसे ऑप्टिमाइज मेथड बताते हैं। तो पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच का यूज़ कर लेते हैं। इसमें भी सेम हमारे को उसी तरह फंक्शन बना लेना है, फंक्शन इफ सॉर्टेड। इसमें भी अरे पास कर देते हैं, इनपुट हम आखिरी में देंगे। इसमें हमने दो वेरिएबल बना दिए और उसकी वैल्यू हमने पहले ट्रू दे दी। डिफेंडिंग का भी बना देते हैं एक, इसकी वैल्यू भी हमने ट्रू दे दी। अब हमने एक फोर लूप लगाया। फोर लूप को हमने आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, आई लेस देन डॉट लेंथ, और आई को आगे बढ़ा दिया। ओके, अब इसमें हम चेक करेंगे कि इफ अगर ये हमारा अरे है, अगर हमारा जो प्रेजेंट में जो अरे है वो छोटा है उसके पिछले वाले एलिमेंट से, i-1 से, और उससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, असेंडिंग को क्या कर देंगे,
फॉल्स कर देंगे कि ये हमारा अफेंडिंग नहीं है। और सेम यही हम केस करेंगे फॉर हमारा डिफेंडिंग के लिए कि इफ हमारा आ रहा अरे अगर इसमें हम ग्रेटर देन का फाइल लगाएंगे, ग्रेटर है तो हमारा डिफेंडिंग के लिए फॉल्स कर देंगे हम। तो इसमें हमने दोनों कंडीशन लगा दी। अब हम इनको बाहर रन कर लेते हैं कि अगर ये अफेंडिंग हुआ तो sorted in ascending order, और if desk return sorted in descending order। इसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी। ओके और अगर ये दोनों भी नहीं हुआ तो नॉट sorted। ओके हमने हमारा फंक्शन लिख दिया। और इसके टेस्ट केसेस चेक कर लेते हैं। वही हमारे टेस्ट केसेस है जो हमने पिछले बारे में लिखे थे। हम टेस्ट केस के डिलीट नहीं करेंगे। टेस्ट केस 1 console डॉट लॉग इज sorted। अगर ये sorted है इसमें हम इनपुट दे देंगे हमारा 1 2 3 4 5। अब जैसे इसको रन करेंगे हम तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आया। एक बार मैं आपको कोड समझा देता हूँ। इसमें हमने क्या करा, दो वेरिएबल में हमने ट्रू दे दिया उसके बूलियन वैल्यू। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगाया। पहले वाले में हमने बोला इफ अगर हमारा अरे है, अगर वो उसके पिछले वाले एलिमेंट से छोटा है, जब अगर हमारा अरे है वो पिछले वाले एलिमेंट से छोटा है तो हमें पता है कि वो असेंडिंग हो ही सकता। तो हमने असेंडिंग को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। इनिशियली हमने दोनों को ट्रू करा था। और इसमें हमने सेकंड कंडीशन लगाई कि इफ अरे अगर हमारा ग्रेटर देन अभी वाला एलिमेंट हमारे बाद वाले से ग्रेटर है तो डिफेंडिंग हो ही नहीं सकता। तो हमने डिफेंडिंग में फॉल्स कर दिया। और फिर हमने उसके बाद हमने दोनों में चेक करा, अगर इफ अफेंडिंग है, अगर वैल्यू उसकी ट्रू होगी तो फोर्टेड इन अफेंडिंग ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। अगर वो नहीं होगी, डिफेंडिंग है, तो फोर्टेड इन डिफेंडिंग ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये दोनों में फॉल्स हो गया तो हमारा नॉट फोर्टेड अरे आ जाएगा। तो हमने पहले टेस्ट के पास करके देख लिया कि अफेंडिंग ऑर्डर है। तो हम फिर टेस्ट केस 2 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस 2 इसके लिए हम कंसोल लॉग कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग इफ सॉर्टेड 5 4 3 2 1। देखो पहला वाला हमारा अफेंडिंग आ रहा है, दूसरा वाला डिफेंडिंग आ रहा है। एक हम सेम इसी तरह के से एक अनसॉर्टेड के लिए चेक कर लेते हैं। देखो हमारी तीनों कंडीशन, तीनों टेस्ट के पास भी हो गए। अब इस कोड में हमने करा क्या, हमने सबसे पहले दो वेरिएबल लिए, उन दोनों में एक में ट्रू स्टोर करा, दूसरे वाले में डिफेंडिंग में भी ट्रू स्टोर करा। हमने हमारा कोड रन करा। इसमें हमने पहली कंडीशन में चेक करा अगर अरे छोटा रहेगा तो वो अफेंडिंग फॉल्स हो जाएगा और इसमें डिफेंडिंग फॉल्स हो जाएगा। दोनों इनपुट ने फॉल्स दे दिया। एक बार इनको हमने चेक कर लिया, इफ अफेंडिंग अगर ट्रू होगा तो हमारा फोर्टेड अफेंडिंग उड़ा जाएगा, अगर डिफेंडिंग होगा तो फोर्टेड डिफेंडिंग उड़ा जाएगा, और नहीं होगा तो नॉट फोर्टेड आ जाएगा। हमने इसको तीनों टेस्ट कंडीशन में चेक भी कर लिया। अब इससे भी अच्छी एक ऑप्टिमाइज मेथड है, वो मैं बताता हूँ। उस मेथड में क्या होगा, मतलब उसमें परफॉर्मेंस एफिशिएंसी हमारी सबसे अच्छी आएगी। इसमें भी हम सेम इस काम करते हैं, पिछली वाली चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। टेस्ट के सिर्फ हमारे सेम रहेंगे, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, बस कोड हमारे को अंदर का बदलना रहेगा। कोड की हमारी ये चीज़ें भी सेम रहेगी। केवल यहाँ से जैसे हमारे को इसमें भी दो बनाने पड़ेंगे, दो वेरिएबल हमने बना दिए। इसमें भी सेम उसी तरह फॉर लूप लगेगा हमारा। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन अरे की लेंथ पे छोटा रहेगा, आई प्लस प्लस रहेगा। ओके इसमें भी हम सेम इस कंडीशन लगा के चेक करेंगे, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट इसका कंपेरिजन करेंगे इसके बाद वाले एलिमेंट से।
असेंडिंग में क्या करा हमने, इसके अगर बाद वाले एलिमेंट से बड़ा रहा तो हम उसको क्या कर देंगे, डिफेंडिंग, डेफ इज इक्वल टू फॉल्स, एल्सिस आर से छोटा रहा तो हम कर देंगे फॉल्स। और इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, इस अगर असेंडिंग में नहीं है एंड देन नोट डिफेंडिंग में नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे नॉट सॉर्टेड। फाइनली इसमें हम एट द एंड लास्ट में हम रिटर्न करेंगे, अगर ये असेंडिंग हुआ तो आप क्या प्रिंट करना, सॉर्टेड एंड असेंडिंग ऑर्डर। ये हमने कोड लिख दिया, अगर ये रिटर्न होगा, असेंडिंग होगा, डिसेंडिंग होगा। एक बार रन कर लेते हैं, ये हमारा कोड काम कर रहा है। एक बार मैं आपको बताता हूँ कोड हमारा काम कैसे कर रहा है। जैसे हमने इसको पहले क्या करा, सॉर्ट करा, ये सॉर्टेड हमने यूज़ करा। उसके बाद हमने इसमें चेक करा कि अगर ये दोनों को हमने वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ट्रू फॉल्स। फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, फॉर लूप को हमने इनिशियली फिर स्टार्ट करा। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई, इफ अगर हमारा आरे है वो अगर बड़ा है इसके पिछले वाले एलिमेंट से तो डिफेंडिंग हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। वो एल्स इफ अगर हमारा आरे है वो छोटा है इसके पहले वाले एलिमेंट से तो हमारा क्या होगा, असेंडिंग फॉल्स होगा। हमने फिर एक ये हमारा दुख खत्म हो गया। फिर हमने कंडीशन लगाई, इफ अगर असेंडिंग में नहीं हुआ, डिफेंडिंग में नहीं हुआ तो क्या होगा, नॉट सॉर्टेड होगा। तो हमारी तीनों कंडीशन चेक हो गई। उसके बाद हमने फाइनली रिटर्न कर दिया कि इफ अगर असेंडिंग नहीं हुआ, असेंडिंग हुआ तो सॉर्टेड एंड असेंडिंग ऑर्डर आएगा, अगर असेंडिंग नहीं हुआ तो सॉर्टेड एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा। तो हमने ये दोनों कंडीशन लगा दी, हमारी दो वैल्यू रिटर्न हो गई। हमारी पहले वाले में ये रिटर्न हुआ, दूसरे वाले में हमने ये दोनों रिटर्न कर दी। उसके बाद हमने हमारे तीनों टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट केस में हमने असेंडिंग ऑर्डर में दिया तो इसने बोला हाँ ये असेंडिंग है। दूसरे में हमने डिफेंडिंग वैल्यू दी तो इन्होंने इसने कहा डिफेंडिंग है। तीसरे में हमने अनसॉर्टेड वैल्यू दी तो इसने कहा नॉट सॉर्टेड है। तो हमारी तीनों तरह अप्रोच से हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो हमारी जो फाइनल अप्रोच है ये वाली, यह ऑप्टिमाइज अप्रोच है। तो आप इंटरव्यू कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस अप्रोच से दे सकते हो क्वेश्चन। द क्वेश्चन नेम इज द रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे like from sorted or unsorted array also. So like the problem statement we read, given an array integer, write a function to remove all duplicate element and return a array contain only a unique element. Input is like 1 2 3 3 4 5, so the output of only the unique element like 1 2 3 4 5. So there are many approaches to follow this problem. So first I can give a sorted approach, like in the sorted array we can give the particular solution. So first let's go on VS Code. Like the first approach for a sorted element, let we remove the duplicate. So first we can create a JavaScript function, like we follow this problem in a JavaScript. First we create a function named remove duplicates. Then we pass a array in this. Then we create a variable using let name I with initialize with 0. Then we write a for loop let and then initialize with 1.
then jail less than arr dot length, like the length of the element is less than then we increase the count. Now we can do check the condition, like we write a if condition. If r array I if not equal to array way, then we can increment the I variable, and if they increase, we can, like in array variable, we can pass the value of array j index. Then finally, like the after the for loop, we return the code. So first we use the splice method of JavaScript that can give the initial element of the array. So we can use splice, that arr dot splice, then initialize with 0 and I plus 1. Then this is our function to remove the duplicate element in a sorted array. So then we can call the function, we console log it, then remove duplicates. We give array value, like we give duplicate value 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. Okay, now we call it the function. Like you feed the function, we in input we give the duplicate value, so the function can run only the output the unique values like 1 2 3 4 5. So this is the first approach for sorted elements to remove the duplicate elements. Now move on the next approach. Now we follow this question for the second approach, like for the unsorted arrays. For first same as first approach, we create a function name remove duplicates, then we pass an array in the function. Okay, then like we use in this method fetch, like JavaScript feature name fetch. In the fetch, automatically the unique values are stored or the remaining duplicate value are removed. So we directly return them, like return, then we spread new fetch, then pass it array on them, then console log the function, console log remove duplicates, then like we write the array variables 2 2 3 3 4 4 5 5. Okay, now we can run this, like we can pass another variable, then run it. Like you see in, we can pass the inputs the duplicate elements, but in the output we can give the unique values. So this is the inbuilt function of JavaScript. So this is for unsorted arrays. You can also follow in sorted array also, or like you follow it unsorted also. So this is the inbuilt method, or the first approach is a to for loop method. Then there is another approach also to solve this problem for unsorted also. Like the third approach to solve this problem is for both the sorted and unsorted array. This approach follow we use the filter method of the JavaScript. So first, like we create the function, the same function we can create the before. Now we pass the array, then we return the direct, we take the variable, then apply the filter it, then
in filter there are two values for path, first item and index. So there is item and the index. Then the index of item is the equal to the index of item is equal to the index, the index of item is equal to the index, then this is our function. We console it, console.log, we pass our function, remove duplicates, we give the input values 1 1 2 3. Like you use many test cases to check our code, but we can follow the many approaches, so we only take a one test case. Like we can upload the item, to give the item index. Like we apply the index on array, we missing this. Now run this. Like you see on the screen, we give the input, like we give a rough input for different value, and the filter the unique values and remove the duplicate elements. So this is the third approach. There another approach to follow this problem. They both are working for sorted or unsorted arrows. Or if we don't worry, if interviewer ask any for sorted or unsorted, you write this solution. They are working. So the fourth approach to follow this problem is using, like we can map the particular element, create another variable, we map them, and we can remove the duplicate from both the sorted and unsorted array. So first we can create the function remove duplicates. Okay. Then we pass array. Okay. Now we create a variable using const variable. Name fin. Then we write an empty. Then we use in a filter method, dot filter. Or in this method we do not need an index, so we only take the item. Then we apply the condition if fin of item then the value of the item if false, return false. Fin of item and the value is return false, and the fin of item value is equal to true. Then finally return the true value. So this the map the value of the fin element, and they only take the value and remove the duplicate value using this approach. Like we console log it. We pass the value. Like we give a random value, then run it. We finally return true. So you see it on the screen, like we give the input, then the output have unique values. So this is the all four approaches to solve remove duplicate element
in sorted and unsorted array. And you can practice this question, or you also try more approaches. Rotate an array elements using JavaScript. Like the rotation are two types, like left rotation or right rotation. So first we read the program statement. You are given an array of an integer, and in an integer k, your task is to rotate the array by k position. You must implement the solution using the different approaches, and the optimal approach is the reversal algorithm, like whichever in place or optimal method. For the rotation type, left rotation, each element of the array shifted to the left by one index, and the first element moved to the end. This is the left rotation. In the right rotation, each element of the array shifted to the right side by one index. The last element moves to the front side. For you see the examples on the screen, like the left rotation, like we give the how many times we rotate. So like if k value, then we rotate the array k side, and we also give the rotation, right rotation example also. So there, to follow this problem, there are different approaches, and if a optimal approach that now we have reversal algorithm. So first we solve with the brute force approaches, that we use the JavaScript function to solve this problem. For the first approach is to use the inbuilt function. So let's go to the VS Code. For now, we follow this question using the first approach. Like this is the brute force approach. We use the inbuilt function in this approach. So first we can create a function name rotate array. Then in the function we can pass a array and a k, that how many time we rotate the array. Then we can first find the k value. So we can divide the k with the array length. We can divide them. Then we run a for loop. In for loop, the I initialize with 0 and I is less than the k value and the increment counter. The I can increase. Okay. Now we can, in this question, we can like push the element and shift them. Like we can shift the element, like first we write the code, like first we can push the code, push, then we can do shift operation. These both are the JavaScript inbuilt function. So that's why the if you brute force code, because they are not optimal approach. So I can explain the code, like first we can find the k length, then we run a loop. In this loop, we first shift the element, like the shift function run first, then the push function run. For the shift function can run, and they can shift the element, and after the element shift, the push function run, and after the push, the array are shift how many times the k length. Okay, so we return the array. Now run the function, it's working or not. Console.log, then rotate array. Now write the array input, like we write 5 6. Now how many times we rotate the k? So we rotate the k like 2 times. Okay, now this is the left rotation. Okay. So now we write a comment. So if you can download the code, you can easily understand. If you approach one, left rotation. Okay, now you run the code. So you see on the screen, the input we can give the integers, and in the output they can shift by 2 elements. Okay, so the same process we follow it for right. So first I can copy then comment it, then for right rotation. Okay, right. So in this process we can do different function, like in previous code we used the shift function and push function, but for the right rotation we don't push the code. We can pop the code,
and we don't shift, we can unshift the code, because we do the rotation from the right side. So first we can unshift, then under the unshift we do pop operation. Now run the code. You see on your screen like the previous are the rotated by left rotation and the recent output was a right rotation. So this is a brute force approach that we used. So there is one more approach. This approach we also like for using the functions, but this is the different function we use to follow this problem. Then in the final we can follow using the optimal approach named reversal approach. So now the second approach, we like the same code, same function are used, we copy them, but we change the different logic of the code. Okay, so we remove the for loop from this code. Now what we do, like there was the first we find the length of the code, like create a variable name rotated, then we can splice with k, we can splice the array with k elements. Then concate can add, like connect two different array. This is the concate operation. Concate. Then under the concate we can splice the array using 0 to k. Okay, now return the rotated variable value rotated. Okay, now we done the code. Like you see on screen, the this approach we perform the left operation, like we give the positive value of the k element so they can perform the left rotation. There is a minor difference in left rotation and right rotation in this code. So like the left rotation we can give the positive value of k, and the right rotation the same code we use, but we do some minor changes. Like this is a right rotation, we use same function, but only we can negative the k value, so they rotate on right side. So you see the output of the code is rotated right side. Okay, right side. Like in the top function we use the fly function. So they are the minor different in fly function. So in the both the left rotation right rotation we use the fly function. So in this also we use the fly function and run the code. Okay, now run the code. You see the output, they also rotated in right side also, like how they rotated in left side, they also rotated on right side. Okay, so this is our second approach to rotate the array with right side. So now we use the second approach to solve the problem. Like first we can solve using the push and pop method and the shift and unshift method. And the second approach we can use the JavaScript slice function. So this is the second, and the first we can follow the left rotation for them. So we
take the same function we used before, because there is some minor changes in the previous code. So let's uncomment it. Then we can remove the loop on the function. Okay, and like we can first create a function, rotate array, pass the value, and then we can create a variable name rotated. We can give different name, like we can also give name like slice. Then we use, like, letting slice is already a function, so we don't use the slice function, so we use sliced name. Sliced. Then we slice k. We can apply the slice operation on k and concate it to the slice and the particular range. So the range is the 0 to the length of the k. Okay, to k, and return this sliced variable value. Okay, so now run this code. So you see it, they can left rotated. Now we do the right rotation. There are some minor change on the right rotation. So we write the command first, right rotation, and in place of the k, you can give the negative k value. That's only the you can do to give the negative k value. So in this we can minus k and run the code. So they can give the right rotation. So you first you can see they can rotate on right side, not on left side. So this is, so we run the code and show the output, like they can rotate it. So the function are same, that's why they can show the code. First we can, like you see it, the previous function they give different output, and the function they can give different output. So this is the right rotation. Okay, also I can show the left rotation also. So this is the left rotation. Okay, so the left rotation, the values are rotate the left side, and right rotation, the value are rotating right side. So these both are the JavaScript function method. There are another method using splice method. So I give the third approach also. Then finally we can follow using the reversal algorithm. So we write the command roach third. In this approach we first take the code, because we don't rewrite the dry code. Okay, now in every code we can find the length. So length is find. Now let, in this code we use the spliced function of JavaScript. Okay, then we can splice the value 0 to k. Okay, then return spliced dot concate array. Different code like ar array dot concate dot spliced. Okay, concate spliced. So this is the right code. So now we run the code. So you see the array is rotated left side using spliced method also.
So now we can also do the code for right side also. So we comment it and we write the comment right rotate. Okay, like there is this code is also for minor changes, only you can negative the key value and they can write it on the you once more time you can run the code. Like there is a two changes in this code. You can change the negative side and one more changes. You can spliced and concate them with the array. So these two changes can rotate this on right side. So you see so the range is not from 0 to k. The range is only the negative. They directly cut the elements. Okay, so we can run the code. So they can rotate on right side also. So these all three are the, like you can say it, all three are the brute for approach, like inbuilt function approach. So we can write the final approach if the optimal approach that if you first the interviewer ask you question, you can give these approaches, and then if they ask about the optimized approach, you can finally write the code on the optimized approaches. Okay, now we follow the question using the optimal approach, the approach number 4. So I can write the comment. So first we write the function. We write this code from scratch for you easily understand, because this is the main logical function code. In this we don't use any function, any JavaScript function, so you can solve in any language using this logic. So first the name is rotate. So you pass array and the how many time you rotate. Okay, now in this function first find the k length. So k modulo the length of the array. Okay, now in this function we use another function named reverse. We also use the JavaScript inbuilt function reverse, but we in this code we don't use the JavaScript function, so we write the reverse function. Function reverse. For this function take three input. First the array, then starting point name start, then ending point name end. Okay, so in this function we use the while loop. If start less than end, the loop is running on the particular situation. Okay, now if array of start and the array of end, if end equal to array end and array start, so increase the start and decrease the end. This small function is also question name reverse array, so you also know this also. So we write the function
Now we use the reverse function inside this rotate array function. So first we write array, then start with 0 and k minus 1. Okay. Now reverse, start with array k and in the ending of the loop and the dot minus. So this code is for the left rotation. Okay, left rotation. So there is one more reverse array, so with 0 and ar dot length. Like first you can rotate to the k position, then rotate after the k position, then finally rotate the whole array. Okay, now return the function, return array. Now console log it, folder log, rotate array. I give the input size, give the values, how many time we can rotate, and run the code. So you feed the code rotate 2 times. So this is the left rotation. Up there in this code there are minor changes. You can do right rotation. So the reverse function code is same. In the rotate function, the some code are same. So first copy this code, then comment it. Now for right rotation. Okay. Then only you can change the 2 lines on this code. Okay. So the last rotation if the rotation of the array is important, but the initial 2 reverse rotation are different from the left rotation. Okay. So we rewrite the code like reverse. The array is same. They start from array length code. So now done this right rotation code. So you feed, they can also rotate on right side also. Like we do the right rotation and also we do the left rotation. So this is the old. In this question we can cover many types of question, like the interview can ask question like you feed rotate array by one place, rotate array with k element, left rotate, right rotate, and they also ask the in place rotation. For the optimal approach, this is the in place rotation. Like in this function, the time complexity and space complexity optimized. So you can rotate the array on the particular places. So there is no space occupied and the efficiency is also good. So this is the optimal approach. And the old approaches 3 before this approach are the inbuilt function approach of JavaScript. So this is the classical question. You can practice them. Name move all zeros to the end. So this is a question in that are asked in DSA interview. So like first we can you read the problem statement, like given an array integer, write a function that return a new array where all the zeros are moved to the end while maintaining the relative order of the non-zero elements. So like we can all the zero element, if the first we can reorder the non-zero elements, then after we can put all the zero elements. So like you see on the example, so we solve this problem using all approaches. Like first we follow brute force approach, then we follow using optimized approach, and we follow using 2 optimized approach. So let's go to VS Code. Follow using the approach 1. So we comment it like approach 1, the approach 1. So first we create a function, name
move 0 to n. Okay, now we pass array in this, and let, like, in this question we can use a extra array to store the first they can, we can give the non-zero elements, then we place the zero element. So we create a new array named result, and there is an array. Okay, now we apply a for loop. We initialize with 0, and the length is equal to array length, then increment the counter, and we apply a condition. If the array value is not equal to 0, then we push it on result, the new array result array. Okay, so push result array. Okay, now, like, in we can store the initial array value. Now we store the remaining 0 value. So first we check the length. Okay, if there is no 0 element, for the code is already worked. But if the 0 element, we check the result length and the array length. So we apply condition while result dot length is less than array length, then the remaining position we can push the 0. Result dot push 0. Okay, now I think the code is correct. Okay, now we return the result. For now, console.log, we write the function, we give the input 1 2 0 3 0 4 0 5 6. Okay, now we run the code. So you see the output, the input we give random, we give the 0 at the random value, but the in the output the all the 0 are at the end part of the array. So this is the first approach, this is the brute force approach. Now we follow using second approach. So we copy the code and remain, like, the boilerplate code is same, like from the function name and the console log is same. So we used this code, first copy then comment it. Like, now we use even approach 2. Approach 2 is now a count and fill method. Like, we take a index counter and we use them and sort them and the all the zeros at the end of the array. So we use the approach 2. So now the, like, you can copy the code and you can remove the this part. Now we can create a count variable. Okay, in count variable we apply the condition, we create a loop name, let I is equal to 0, I less than arr dot length I plus plus. Okay, now if check with if arr I not equal to 0. Okay, so we can increase the count. Okay, we can increase the count and equal to the array index. Okay, now they are solved. Now we use another while count is less than the length of the array. So we can use error count plus plus is equal to 0. Okay, so this is, like, in this code, this is optimal approach we can follow using in place method. So let's run the code. We can place the count plus plus. Okay, now run the code. Now you see the
the input we gave the random array and the output the whole zero at the end of the array. So now what we do, like we can create a count that is the index of the array. So we create a count and we can store the count. If they are not zero, we can increase the count. Okay, now after the for loop we can use a while condition. If the count is less than the array length, all the value that are in the count we can paste the zero value. Okay, so this is the second approach. This is a optimal approach, but we use the JavaScript method. There is one more method this is that is more optimized. So we use them. So the final second approach is finished. Now you use the third approach. Okay, so the approach third, we use the same function, but you may return the remove from code, let index. Okay, now initially the index is 0. We apply a for loop, initialize with 0. The length is, and the initialize increment the counter. Now we apply condition if I not equal to 0. So we write if error of index, okay, equal to ARR of index. This is the in place method, or this is the most optimal method. So we done it. Now we increase the index. Now finally return the array. Okay, so we done it. Is working or not? Now like this method is also working. Like you give the input of non-zero or random elements, but all the zeros at the end of the array. So this is the three approaches. The first one is brute force approach, and the last two is the optimal approaches. So you follow any method, but whenever the interviewer asks, you can first follow using the brute force method. When after you can follow using optimized method. Okay. Union of two sorted arrays. This is a classical DSA question that are coming DSA interview round. So first right. So first we can read the problem statement. Like you are given a two arrays, array 1 and array 2. Your task is to return their union, all the unique elements that are present in the either of the two arrays. So write a efficient function using a two pointer approach. Like this is the for the efficient approaches. Okay, we also write some brute force approach also using the JavaScript function. Okay, so now like you can see the example. You can give an input to arrays, or the union of the arrays are the output. Okay, so now let's go to the VS code. So now we follow using the brute force approach. So in this approach we can create extra array, so the space complexity is high as compared to the optimal approach. Okay, so now first we create a function name union array. Okay, now in this array we can pass two array. In this function we can pass two array, name array 1 and array 2. Okay, now what we do, we first create a combined, first we can need to combine the both array. So we create a variable name combined, and we use the concat function of the JavaScript to join the both the array. Okay, so we used arr1 dot concat arr2. Okay, now we create one more array name result. In this we store the unique union of the array. Okay, so we created. Now we use a for loop and initialize with 0. Okay, now the length is equal to the length of the combined array. Okay, then we can increment the counter. Okay, now we can apply a condition if the result dot includes the combined
Then we result dot push the combined of I. Okay. Now we return the result. Return the result. Now we console log it. Console dot log. So we write a function like union of array. And the function there is two variable, two array. First array is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And the another array is 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So this is the one test case. You can also you test in many test cases. So we run the function, it's working or not. So there is some type of error. What the error? So there is a include the combined function like we okay, we correct it. Not result if the result not equal to the includes. Okay. We like we check the if condition that's correct or not. Control Y. Okay. We check the if condition. Okay, what is the problem on the dot includes combined of I. Okay. Now start. We can push result dot push combined of I. Okay. Now we rerun it. So you see in the output the our union of the arrays working, like we give two arrays and they in the output they show the union of the both two arrays. So this is our first approach. Okay. So we write it in comment. So if you take the code from GitHub, so you have clarity. So this is the approach 1. Okay. Now we comment it and we use the function because we don't rewrite in the coding. There is a rule, there is don't repeat yourself. So if the code is rewrite again, you can use the code. Okay. So there is a second in this method. There is second approach. In this approach, we use the set function and of JavaScript. Okay. Approach 2. So in this function, we directly return new set and we spread operator. We also use the spread operator. Okay. So we done it, it's working or not. So our this approach is also working correctly. And now we use the approach 3rd. This is the optimal approach to solve this problem. So this both to approach this approach is also optimal approach. But there is we use the JavaScript function. And the first approach is like bootstrap. The respect complexity of first is very high. So now finally we use the approach 3. Okay. Approach 3. Like first create function. This is the optimal approach. Union array, then pass array 1,
array2, then sort array1. Now we give two inputs in the sorting array, a b, b. Now the direction is a minus b. Same for array2. Now we apply a while loop. The I less than, here we're on dot length and j less than error2 dot length. So now we apply if condition. If error 1 I is less than error 2 I, so we apply if condition. Like this is the we apply the result condition. One more is condition. If result dot length minus 1 not equal to error of I 1 I. So result dot push error of I 1 dot I. Then increase the I plus plus counter. Now else if condition, if error of I less than error of 2j, like in default for we apply j condition. Okay, now if result dot length minus 1 is not equal to error 2 I नहीं j. So then result dot push to j. Okay, so increase the j plus plus. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले Increase the j plus plus. हमने अपने रोज गूगल प्ले कंसोल अकाउंट को कैसे रीएक्टिवेट किया। शायद आपका अकाउंट भी क्लोज हो गया है, Else आप उसे दोबारा एक्टिवेट करवाना चाहते हैं। साथ में टाइमर्स दे result सबसे पहले dot length
क्लोज या सस्पेंडेड क्यों पड़ता है? सी माइनर वन रिलेशंस ऑफ नॉट इक्वल टू से अकाउंट को मैच किया जा रहा है। एरर आई सबमिट करने के बाद कुछ दिन थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन हमारे केस में गूगल टीम ने हमारा रिक्वेस्ट एक ही दिन में प्रोसेस की। divert dot push Don't reactive. Oh, great news. Congratulations, Play Console account has been reactivated. Thank you, Google. Hi. Reactivate करने में कोई भी C++. exception है बस। Now we apply one more while condition. One dot length, and if result dot length hyphen don't print -1 is not equal to error of I minus I. Okay. Now we give the result dot push error of 1 I. Okay. So we use the same condition for while loop for this also. But some minor changes. Like 2, 2, 2. J, J, and J. And this also increase I plus plus increase J plus plus. J plus plus. I plus plus. Now return result. So now we write the console log. Union array 2, 3, 4, 5, 4, 5, 7, 8. Now run the code. So there is a problem in sort. Not the problem. Like this is the wrong way. Like that I 0 0 delivery. Okay, so now you see on the result the union array is combined. Like this is the greater than sign.
So now our code working properly. Find the intersection of two array. This question is mainly asked in DSA interview question. So first we read the question completely. Okay, find the intersection of two array. Like you are given two integer array 1 and array 2. Your task is to write to JavaScript function that return an array containing all the elements that are common to both arrays without any duplicate in the result. So like you give a input 1 2 array 1 is equal to 1 2 3 4, array 2 is equal to 3 4 5 6. So the output becomes 3 and 4. So we can follow using three approaches. First is brute force approach using loop method. Then second approach we can use the JavaScript function, and third is the optimized approach named two-pointer approach. So first we follow using the approach 1. So let's go to VS Code. Now we write a function named intersection of array. Okay, now in this array we can pass to both the arrays. In the function we can pass to both the arrays. Now we create a result array where we store the result. Now we write a for loop for first array. Let I is equal to 0, I less than ar1 dot length, and increment the I. Okay, for if in this loop another a loop for the second array. So let y is equal to 0, j less than ar2 dot length. Okay, now increment this also. Now we check a condition. If ar1 I is equal to ar2 z, and if the result not includes ar1 of I. Okay, so this is not includes. So we push this array to the result, to push the value of array in the new array name result. Okay, so we write it. Now return the function, return result. Okay, so we now check if the code is like the correct. So we console log it, console dot log intersection of array, input 1 2 3 4. Okay, the another array 5 also, 5 on the array 3 4 5 6. Okay, so we write both two arrays. Now run the code. So like you see it, we give two array, or that is the output of the common arrays. Okay, so this is the approach 1 to follow. This is the brute force approach. There is a second approach also. There is approach 1. Now follow using second approach. Approach 2. So use the same function, but we do some minor changes, like we remove the loop. This is follow using the array set function. So first we create a set. Let set 1 is equal to new set of array 1. Okay, now we apply a for loop. In for loop num of ar2, we loop the second variable. Now we check if
Now we check the array. Now we check the fed1 has num or not. If there is num, there is num. For result dot push the array 1 into the resulted array, and fed1 delete the num. Okay. For the finally we can return result. So now run it. So what we do, we declare like we not giving the array, we directly use the num variable. Okay. So we use the num because we use the another loop. So we directly push the num. So now check it. For you see in output the common value for both arrays are printed. So this is the approach to follow this problem. So there is an optimal approach, two-pointer approach. Also, so we write in, we use the same function, we do some changes. First we remove all of them. Now first we sort the array. Sort AB A minus B. Okay. Same for array 2 also. Same for array 2. Now we declare variable name I is equal to 0, Z is equal to 0, and result array. Okay. Now we write a while condition. While arr1 less than I less than arr1 dot length and j less than arr2 dot length. Okay. So if arr1 I equal to arr2 z, so the result dot length minus 1 is not equal to arr1 dot I. So there is this is also if condition also. So result dot push arr of 1 I, and now apply the else condition. Else if arr1 less than arr2 I plus plus, else j plus plus, then return result. Okay. So our function run it. For the function introduction of array, first we sort, then we apply while condition. Like while we use the end. Okay. Now we run it. There is another problem in this code. If
I less than arr.length and v less than arr2.length. First, if the result dot length not equal to arr1, so first they push it, else if arr2 less than, so we don't give the array value, we give the value also. Oh, so one thing we are missing, we don't increment our equal to condition counter in the both the courses. So then run it, and if the both the condition are, we increment both the counter. Okay, so we return the result outside the while loop, not in the for loop. So there is the indentation error. We console the function outside the, now we can run it. So you see out the output, there the unique output are print. So this is the our two pointer approach. This is the optimized approach. And frequency of elements in array. So this is the array question that are mainly asked in DSA interview. So first we read the program statement. You are given an array of integer. Your task is to determine the frequency of each unique element in the array. So now we can count the how many times the array value are, like there is a given an input array like 1 2 3 4 5 2 2 4 6. In this array they give all the frequency of the array, like 1 have 1 frequency and 2 have 2 frequency, and all the array whatever the frequency. So we can follow using different approaches. So first we follow using brute force approach, then another approach, then we can follow using the optimized approach. For now go to VS Code and we can follow using first approach. For now first we create, this is the approach 1. So first we can create a function named frequency of array. Okay, now we give array as input. Now we create a array name frequency, object name frequency. We give the frequency of object in on this approach. Now we can create a for loop, initialize with 0, then less than the length of the array, then increment the value like that length I plus plus. Now we can apply condition if frequency of array is not equal to undefined, so we can continue it. Okay, and let define a count variable also, initialize with 0, then apply one more for loop, let initialize j with 0, then same her length is equal to the array length, and increment the j. Okay, now in this check the condition if arr of I equal to arr of j. So what we do, the frequency of the array is equal to count. Okay, count plus plus. Now what we do, we return the frequency. So this is our approach. Now we console log it to check it work or not. Console dot log now the frequency of array. So we give the input name 1 2 3 4 5 5 2 4 6. Okay, now we run it, it's working or not. We run it, it's okay.
So I think there is an issue in the code. So now what we are doing now, like we directly give the counter, and after this if condition we can do frequency of array equal to count. Okay, now we check it's working or not. Slide with 0. Okay, now this directly continue it. What we doing wrong in this code? Okay, we do a minor. This is small but sometimes not visible. So like you see it, we can give the input at the output they show all of the frequency of the all array elements. So this is our first condition. This is our first approach. Now for using first copy this function because we use the function in approach second also, but some minor changes. Approach second. Now what to do? We like this our code is same. Now what we do? The frequency of array equal to dot like the frequency of array or 0 plus 1. Check it's working or not. So this process is also working. So in this is simple approach. If you directly like check the frequency on the main. So this is the optimize approach. The first approach this is optimize. Or there is a one more approach that also optimize approach. The approach is approach 3. This we use using the frequency map method. So first we paste this. Now we remove all the. Now we let first create a frequency map. First new map. Okay. Now what we do? We apply a for loop for let num for array num of array. Now we okay. Now we set the frequency map dot set frequency map the error of I error of I or 0 plus 1 or return the we directly use the num value. Return frequency map dot get num. Okay, so this is our approach third. We check it like there is for undefined. There is one condition for the undefined also. So we give the 0 also. Like first we can give a num, then we give the 0 also for the second condition. For now this is using the map method. So like this is the third approach. We use the set map method and we map the all the elements of the array, and that like you see on the output
all the elements of the map are visible, but like you see there is a one mistake because all the because we do one minor thing wrong. Okay, like uh, like this. Okay, now we check. So you feed now the code is correct. We write code, they give all the inputs. Okay, how many the frequency of the input. So this is the correct for this is the all the approach that we fold the frequency of the array. There are many also approach, but you can try. Name find the missing number in array. Like you are given an array of size n containing distinct integer from 1 to n plus 1. This means one number is the range 1 to n plus 1 is missing from the array. So your task is to find the missing number. Like example, the input the array 1, 2, 3, 4, 5, 6. So the output of the if the missing number is 3. So you find the missing number in this question. So there to solve this question we have two approach. First is brute force approach and another is a optimized approach. So we follow using first approach, brute force approach. So we are on VS Code. Now we write the command. Then we create a function name missing number. Then in this function we can pass the array. Array. Then we write a for loop and initialize with 1, and the length is equal to the length of the array, and increment the counter and apply if condition if arr dot not includes I. So return the I. So now run the function. The first console log it, write the function and give the input. Okay, so 1, 2, 3, 5, 6. Okay, so the missing number is 4. So now we run the code. So in the output you see that the missing number are printed. We give the input and the missing number is 4. So now follow using another approach. So let's comment this. Now use the approach 2. So first we create a function, same name, we pass array. Then first find the length of the array. Okay, now we first found the total sum using the function n plus 1 divided by 2. Okay, now we create a name sum. We use the reduce function, give accumulator value, then accumulator plus value plus 1, for then 0. Okay, now create a result variable, then total sum minus the sum. Now return the result. Okay, now we console log it, console.log. We write the function, give the input 1, 2, 3, then 5 is the missing, and we run the code.
So the length of the array is this. Okay, like we can, the length will start with 0, so we add 1 also. For the output of this is 4. So this is approach 2. This is optimized approach. Name sum of all elements in array. So like you are given an array of integer, your task is to find the and return the sum of all elements present in array. So like you are given input 1, 2, 3, 4, 5. So the output you can paste all the sum of the array. Like the 15 is the sum. So we follow even two approaches. First brute force approach and another is the optimized approach. So now let's go to VS Code. So now this is our approach 1. Approach 1. So first approach we use the for loops. So first we write the function name sum all. Okay, now we pass array in this. Now we create a variable name sum, initialize with 0. Then we write a for loop, initialize with index of 0. Then the length is the length of the array. Then increment the counter. Then we check if directly sum is equal to sum plus value of array. Okay, now and finally we can return the sum. Okay, we write, we so this is our code. So we console log it, console.log. Then we write the function, give input 1, 2, 3, 4, 5 and run it. So now the you see on the output, we give the input, the sum is 15. So now we follow using another approach. So this is our brute force approach. Now we follow using the optimized approach. So we use the function name sum all. Okay, in this also we can pass our array. So now in this we use the reduce method of the array. Okay, so we directly return it or also paste in the variable and then return it. So we directly return it. So use array.reduce. In this array reduce method, there is two value. First is accumulator and value. So we accumulator plus val then 0. Okay, so now console log it, sum all, give input 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now run it. So you see the output. In this approach also the output is given, but this is the optimized approach. Search an element in array. Like you are given a problem statement and you are given an array of integer and an integer x. Your task is to the search for the element x in the array. If the element is found, return index 0 based, and if the element is not found, return -1. So like you have given an array 10, 20, 30, 40, 50 and the x value is 30. So the output if the second index like 20, if the second index is like 30. So we follow this problem. First we follow using the brute force approach, then we follow using the optimized approach. So let's go to the VS Code. Now first what we do, we write a command for approach
1. Okay, so write function name search. Okay, and if we pass array and a x value. Okay, now what we do, we write a for loop initialize with 0. The length is the equal to array length, or increment the count. Okay, now what we check, if the AR of I equal to x, then return I. Okay, and if not, return -1. So now console.log search 1 2 3 1 2 3 4 5. Okay, now what we search, like 4. Okay, so now run it. So now they give the correct output of the third index, like 4 is present on the third index. Okay, so now we following the approach to, this is the brute force approach, and we follow like now using the optimize approach to, we create the function name search, we pass array x, and what we do, we write wrong searches. Okay, now we create a variable name, we write the map and write the array in this map is equal to I. Okay, so we now the return map has on property. Okay, x is map x put -1. Okay, so now console.log in the search we have to write this 1 2 3 4 5. Okay, now we run the code. So like we give 0, they show 9, and we write 4, so they give 3 index. So this is our optimized approach to follow this question. Name insert element at specific position in an array. Like the problem stated, you are given an array of integers, a number to insert, and a position at which to insert the number. Your task is to insert the number at the given position and return the updated array. Like you give an input, an array of size n, and an integer element to be inserted, and an integer position 0 base index where the element should be inserted. Like return the modified, the output will return the modified array after inserting the element at the specified position. So you like give the input 10 20 30 40, and now you have to insert 25 at the position 2. So in the output, after 10 20 25 30 40, the 25 will inserted. So we have handled both brute force approach and also optimize approach using in place operation. Okay, so now we follow this question firstly brute force approach, then after we follow optimize approach. So let's go to VS Code. Now we create a function, we create function name insert element, then we pass array position, then element. Okay, now we create one more array, name new array, let new array. Okay, now we apply the for loop for let I is equal 0, I less than dot length, or increment the counter. If I less than the position,
then the value of new array is equal to the old array, else if position equal if I equal to the position of array, the new array I is equal to element. Then after, in the else case, the new array equal to array minus 1. Okay, now and finally we return new array. Okay, now console log it, insert element, pass the arrays 30, 40, 50. Okay, now the position is second position and element is 25. Now like we have inserted the 25 after 20. Okay, so let's run it. So you see on the output the 25 is inserted at this array, like after the second position the 25 is inserted. Okay, so this is the brute force approach we used to solve this insert an element. Now we follow using the optimize approach. So we create a function, insert element, give array, give position, give element, and after we use the splice method of array, like splice, we give position, start with 0, and we give element. Okay, now we return the array. So this is the optimized method to follow the question. So now console log it, we give the same output 12, and there now we check it's working or not. So you see your the output, the element are inserted 25 at the second place. So this is your optimized approach using the splice method, and this is your brute force approach. Delete element from an array, like you are given an array of integer and a position index. Your task is to delete the element at the given position and return the updated array. Like you have an input an array size of n and an integer position 0 with the index indicating which element to delete. So you can give the output return the modify array after removing the element at specified position. Like example, you have given an input 10, 20, 30, 40, 50. So you can remove the position too. So the output is 10, 20, 40, 50. So we implement this DSA question using both brute force approach using a new array and optimized approach using in-place relation. So we follow. Now let's go to VS Code. So now we write a function. First we follow using brute force approach. We write function name delete array. Okay, we pass the array and we pass the position of the deleted array. Okay, which element we want to delete, we give the position. So now we create a new array, and after we can create, we apply a loop, for loop, initialize with 0, length is equal to the array length, and increment the counter. Okay, now what we do, we apply a condition. If I not equal to position, so new array dot push the value of array. Okay, so now return this new array, return this new array. Okay, now this is right. First let's console log it's working or not.
So we write the function and give the input 10, 20, 30, 40, 50, and the position we remove like the second position. Now run the code. So you see at the output, like we give the input 10, 20, 30, 40, 50, and the output, the 30 is the second position on the basis of index. For the 30 removing at the output. Okay, so this is the first approach using brute force approach. Now we follow using optimize approach. So let's comment this. Now first in the optimize approach we write the same function, delete array, we pass array and the position. Okay, now what we do, we use the splice method of array. Splice, we give the position and how many elements we remove, one element. Okay, so now and let's return the new array. Okay, new array. Now if there is no new array, we return this array. Okay, so now console log it. The same using the previous one do. We delete array, we give input 10, 20, 30, 40, 50, and we give the position we remove, second position. Now console log it is working or not. For you see out the output, we give the input 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, and we remove the second position element like 30 if removing at the output.
find all pairs with a given sum. This question is also known as a two-sum problem. For the problem statement, you are given an array of integer and a target from target. Your task is to return a function find pair to find the array target. Then return all the pairs of element in the array whose sum are equal to the target. Okay, so the requirement each pair should be represented as an array of two numbers. Return all valid pairs. The same number from the array can be used in multiple pairs as long as its occurrence allows. The order of element in pairs or in the result array does not matter. So like you see on the screen the example, inputs are 1, 2, 6, 3, 8, 3, 5. The target is 6. For the pairs of the given arrays, your target is equal to 6. Like 5 and 1 sum is 6, 3 or 3 sum is 6. So these are the example. Now we solve this question using brute force approach and optimize approach. So now we are on VS Code. Now we write the function. First we solve using brute force approach. So the function name is find pairs. Then in this array we pass one array and a target. Okay. Now first we can create a result array to store the pairs. Then we use a for loop. Let I is equal to 0, I less than yard dot length I plus plus. Okay. So under this loop we write one more loop. Let v is equal to I plus 1, j less than ar dot length, then j plus plus. Then we check if ar of I plus ar of j is equal to target, then result dot push ar of I and ar of j. Okay. So now we in the final we return the result. Now we console log it. Console dot log find pairs. We give the input 1, 2, 3, 5, 1, 7. And our target is like 9. Okay. Now we run our code. For you feed they give the pairs for the given array. The two pairs are have 9 target, like 2, 7 are 9, 4, 5 are 9. So you also give another target like 8. So there is 3 pair of 8. Okay. So this is our brute force approach. Now we follow using optimize approach to write the function name find pairs. We first give array, then give target, let, and we create a array for frequency. We give them name, create new map. Okay. Now what we do? We create a for loop. We can create the for loop using this error, or we also give a result in this also. Okay. Now what we do? We apply the for loop. Now let constant
consent. We create a variable. So there is the target minus num. Okay. We give our name like complement also, because there is a complementary value. So if we write a for loop, let I equal to 0, I less than frequency dot get complement I plus plus. Okay. If condition, if frequency has complement, so what we do? Frequency is complement. So we give result dot push complement and null. Okay. Then so we write frequency dot set num. Then frequency, and we add frequency dot get num or 0 plus 1. Then finally we return the result. Then we console dot log find pairs. Okay. We give input 4 2 6 7 4. Give target 9. So we now run our code. For you see in the result, there is a 2 pairs are created. For this is our optimized approach. Name 3 sum, in which we find the pairs of the 3 sum elements using the array and create their group. Like you are given an array of integer, your task is to find all the unique triplets in the array which sum up to 0. Formally you need to return a list of all triplets like nums I, nums j and nums k. First that I not equal to j, I not equal to k and I not equal to k. So the triplet combination must be unique. No duplicate triplet are allowed in the result. Find all the valid triplets that sum to 0 and each triplet must be written in non-descending order. The final list of triplets should be not contain any duplicate triplet. Okay. So like you give an input like -1 0 1 2 -4. For your output is the triplets of the array, unique triplets. Okay. So this question we follow using two approaches. First is brute force approach and second is optimized approach. So first we follow using brute force approach. For now let's go to VS Code. Now we write approach 1. Okay. So we write the function first. Function we create a function name 3sum and give value array nums. Okay. Now create a variable name result to store the result if you have array. Now we can also find the length. So we find using nums dot length. Nums dot length. Okay. Okay, the length are fine. Now we create a loop, for loop. Let initialize with 0, I less than n minus 2. Then I increase
Then another for loop that starts with way equal to I plus 1 j less than n minus 1 j plus plus. Then another for loop let k is equal to j plus 1 k less than n minus 1. Okay. And the function, the first value is small letter. Okay, the function name, the first value is small letter. So we change it, and like there is not n minus 1 if less than n k plus plus. Okay. Now we apply a condition. If num of I plus num of j plus num of k equal to 0, then const we can create a triplets variable. We pass the value of num of I, num of j, like this is under array, num of I, num of j, num of k. Okay. Now we can sort this array also using sorting function minus b. Okay, now sorting can be done. Now we set a key, const key is equal to triplets dot key. Let dot I convert this into string. So this is our key. I now write if condition, so there is no duplicate element. If the result dot sum r is equal to r dot to string, so equal to key, then result dot push dot triplet. Okay, triplets. Now return the result, and last return result. Okay, now we console it, run it to check it's working or not. Console dot log hyphen input minus 1 0 1 2 minus 1 minus 4 3. Okay, now you run our function. So you see in the output they can create the different group of array. So this is our first approach. Now we following another approach. This is the brute force approach. Now we following optimized approach. Roach 3 approach 2. Now we in the first we write a function name 3 from, then pass the num, then first sort the nums a b, then a b. Okay, a minus b for e. Now what we do, we first create a array in which we store the result,
Now apply for loop. Let initialize with 0. I less than num dot length -2. Okay. Then increase the counter. Then apply if condition. If I greater than 0, and then num of I equal to num of I minus 1. So you can continue. Okay. Then we apply initialize the from variable like left variable is equal to I plus 1. I plus 1. Initialize right variable is equal to length of the array. Length of the minus 1. Okay. Then apply while loop in this. While if left less than right. So const create a variable for sum is equal to num of I plus num of left plus num of right. Okay. Now we check the conditions. If sum equal to 0, so result dot push num of I num of left. Okay. And num of right. Now you push them. Now we skip the duplicate, so we write the skip duplicate function also here. While num of left equal to num of left plus 1. Okay. Then finally left plus then another while loop to check right num of right equal to num of right minus 1. Then right minus. Okay. So now increment the left counter and right decrement. Then apply else if condition for if sum is less than 0. Okay. If sum is less than 0, then left plus L right minus. Okay. Now we finally return the result. Okay. Now we console log our answer. Console.log. Now three sum. We write random values -4, 5, 8. So now we run our function. Now if there is only one group created using this, we give some another number. Okay. Now we run. For in this also there are 3 groups. So this is our solution using the optimized approach. Name maximum consecutive ones. So like you are given a binary array
nums containing only zeros and ones. Your task is find the maximum number of consecutive ones in the array. Like example, there is a nums array, there is 1 1 0 triple 1. So the maximum consecutive ones is 3. The output is 3. For the first two ones from a streak, then there is a 0 and then a streak of 3 ones, which is maximum. So the maximum is 3. So our write a function that takes a num as input and return the maximum number of consecutive ones present in it. Okay. So we follow this question using two approach. First we follow using brute force approach, then we follow using optimize approach. So let's go to VS Code. Now first write the function of approach first. Approach first. We write a function name maximum ones. Okay. We pass. For now, first we write approach 1. Now we create a function name maximum ones. Then in this we pass nums. Okay. Okay. Now we first create a count name max count. Next count initialize with 0. Then apply a for loop. Let initialize with 0. I less than num dot length and increment the counter. Okay. Now let initialize a count variable and give it her 0. Then another loop, let initialize j is equal to I, j less than nums dot length j plus plus. Okay. Now we apply if condition. If num of I equal to 1, then increase the count. Okay. Then what we do? We store the maximum value in max count. Like math dot max equal to max count or count. Okay. Now else else. Now we apply else condition. Else if break the loop. Then return the max count. Okay. Now console log it. Console.log maximum ones. Write the loop 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1. Okay. So now let's run the code. It's working or not. So our code is working, but they give the bad output. So we check what's the problem in our code. Nums is equal to, like, we increase the j, not nums. Okay, that's why they give double value. So they give 3. There is three consecutive ones in our array. So this is the first approach. Brute force approach to follow this question. Now we follow using optimize approach. Approach 2. Approach 2. We write a function name maximum ones. Pass nums on this array. Let initialize max count equal to 0. Let also initialize the count equal to 0. Okay, now apply a for loop. Let initialize with 0.
and the 5 is less than the num's total length. Okay, let's then increment the counter. Now we apply if condition. If num of j I equal to 1, then increase the count and store the max count value using the math.max function. We write a max count and count, else the count is equal to 0. Now return the max count. Okay, now console log it's working or not. Console.log maximum ones 1 1 0 1 1. Okay, so this is your input. Now run this. For this also give 3. For this is your optimized approach. Now like we give the input, for there is a 3 consecutive ones on this side, so they give 3. Like I can increase on this side, so they give 4. Okay, follow DFA question of strings. So first we follow question name reverse a string. Like the problem is write a function that makes a string as an input and return the string reversed. Okay, for like the input there be hello, for the output they can return the reverse of the hello. Okay, so let's go to VS Code. So the question name is reverse string .js. Okay, now we write a function string reverse string, pass a string on this function. Okay, now we return, use the JavaScript function. First str dot split, then reverse function, then join this. Okay, so this is the function to reverse a string. Now console log and print it. It's working or not. Reverse string. Then pass hello. Run it. Okay, that show the opposite of hello. Now we solve another question. Check for palindrome. Determine whether a given string is palindrome or not. Read the same forward and backward input like madam. So there is a palindrome. So the output should true. Okay. So now let's go to VS Code. Now we create another file for palindrome.js. We write the function is palindrome path string. Then first create a name reversed. In this take string and then split it, then reverse this and join this. So in this we use the previous function reverse string function. So first they can reverse, after reverse return is str equal to reverse. Okay, reverse. Now console.log
is palindrome gives like madam is palindrome or not? So it is palindrome. The another question name is check anagram. Like write a function to check if two string are anagram of each other, contain the same character in any order. Like listen and silent. Output is true. Example like hello liar. They are true. They are an anagram. Like hello word. They are not an anagram word. Like the same word on the different elements. Okay. Characters. So we follow this question also. So let's go to VS Code. Write function check anagram.js. If you write a function is anagram str1 str2. There are two input. Now we directly use this method return if str1 dot split dot split dot sort dot join equal to str2 dot split str dot sort dot join. Okay, now we check console log for dot log is anagram. We write first silent. Another our input is listen. Okay, listen. Now check if this anagram or not. Split we have to run it. So there is this is anagram. Fourth question: if longest word in test, like which is the longest word in the test. Okay, so we follow this also for longest sentence terms dot case word function longest word. Okay, my pass string. Now return str dot split dot reduce and reduce a b a dot length the a dot length. So a b. Okay, now console log the function longest word. I love JavaScript. Okay, now let's run it.
str there is one gap. Okay, so there is a for JavaScript. So this is right. So this problem is also solved. Now we solve the fifth question is character frequency. We count the frequency of the character. So let's go to VS Code. Now find count frequency .js. Okay. Now write function count frequency frequency. Okay. Now let's pass the string create a object frequency, then apply a loop. Let care of str, then frequency of care equal to frequency of care 0 plus 1 return frequency. Okay. Now console log it. It's working or not. For loop log count frequency. Like take some out of the output. Like take apple. Now count the frequency. So they give the frequency of all the string. So this is our all 5 string question. Video we follow 5 question. In previous video we also follow 5 question. Now our first question we follow is first non-repeating characters. Like the problem statement is given a string. Find the first character that does not repeat. Return null if every character repeats. Okay. So like A, B, A, C, C, D, E, F. So the first non-repeating character is B. So that's why they print B. So let's go to VS Code and solve this question. So we create a file. Non-repeating JS. Okay. Now create a function. Non-repeating char. Okay. The spelling mistake. String. Okay. Now we create a variable name frequency. Okay. The initially the if empty. Now we use a for loop. Let care of string. We pass a string in this function. Okay. Now if we use the frequency, like if the frequency of care equal to the frequency of care or 0 plus 1. Okay. Now this is the frequency. Now let's calculate how many frequency. Let care
of num. Okay, if frequency scale equal to 1 is equal to return care. Okay, then not for then return null. Now console log it. Console.log non-repeating char. Give the input element like AA, BB, C, DD. Okay. Now the first non-repeating character is C. Let's run it. Okay, there is error. Like in this there is a string. Okay. Now let's run it. For the first non-repeating character is C. For this is our first question. Now we follow another question. The another question is check for isomorphic string. Like if two string are isomorphic, if a character if one string can be replaced to get the second string, each character must map to another character, but no two character can map to the same character. Like example egg and add. So they have the same characters. After this, for the output is true. So let's follow this question also. Like check isomorphic string. Okay. So we write this, create the file, check for more fake string .js. So first create a function is isomorphic, then pass to string 1, string 2. Then first check directly is str1 dot length is not equal to str2 dot length, then return false. Then create two variable map1 equal to empty, map2 equal to map2 equal to empty. Okay, now what we do, we now use loop. Let I initialize with 0, I less than ar1 dot length, increment the counter. Okay, now check if map1 of str1 dot I equal to not equal to, okay, equal to map2 of str2 dot I. If they're not equal, then returns false, and map1 str1y equal to I. Same for map2 str2 equal to I. Okay, now then finally return 2. Now console log it. Console.log is isomorphic. First write add, then write egg. Okay, now let's check it. Okay, we use AR1, so there is no AR1, there is STR. Okay, now let's run it. So this is true, and if we do any changes, not isomorphic, so they show false. Okay, so this is a question for full if the given value is isomorphic or not. They compare both. So now we follow another question. So another question is count vowels in a string. Okay,
So let's follow this question also. And count vowels dot js. Okay. Now write a function count vowels, pass a string, create a variable to store all the vowels. For that we compare it for value a e I o u, a e I o u. Okay. Now what we do? So we return dot str dot filter care. Okay. So vowels dot includes care. So then give their length. Okay, there is triple dot. Now let's run it. So they give 3. Okay. So there is like a, I and e is 3 vowels. So they give 3. For now for the another question. Another question is capitalize first letter of each word. Okay. So given a string, capitalize its first letter of each word. So let's go to the VS Code and follow this question. So capitalize word dot js. Okay, so write const, create a function and give a name capitalize word. Okay, pass a string and str dot replace like this b g v b g w g. So care dot to cut to the case. Okay, now console log it. Console dot log capitalize word and then give any string hello small letters hello world. Okay, now let's run it. Okay, there is a problem. Also we forget to return the answer written. Let's run it. So they capitalize the initial word of. For now we write in small and they give initial word is capital. So now we follow another question. The another question is run length encoding. Okay, so let's go to VS Code. We write the question run length encoding coding.js. Write the function run length coding. Okay, now pass the string and this let result equal to empty and count is equal to 1. Okay, now use a loop
let initialize with 1 less than equal to str dot length. Okay, let's increment the counter. Now what we do is str of I equal to str of I minus 1. We increase the count. Okay, else the result equal to str I minus 1 plus count. Okay, and then count is equal to 1, and finally return the result. Now let's console log it. So the log the run length encoding write a baby cc d. Okay, now let's print it. So they can, like, there is a 3a to the a3, 2b b2, 3c c3, and d2. So they can encoded the word and write in short form. Searching and sorting algorithms. Okay, so today in this video we can solve 5 problems. First 2 problem is for searching problem and another 3 problem is a sorting problem. Okay, so the first problem is binary search problem to find the index of a given target in a sorted array. Okay, so now let's go to VS Code and solve this question. So first we create the binary search file, binary search.js. Okay, now write the function, like function binary search, then pass a array and target. Like in this question we have a array and we find the target which index the target is present. Okay, so this is a searching problem. So first we initialize the left with 0 and then right is equal to length of the array. Okay, then what we do, we apply a while condition. If left less than is equal to right, so first let's create a mid element that store the mid value. So let mid is equal to math dot float. This is the, like, some value of the mid have in decimal point, so they clear that and only write in integer form. Okay, so left plus right divided by 2. Okay, so we created our mid. Now we apply the condition. If AR's mid is equal to target, so return the mid element. Okay, and else is condition. If AR of mid is less than target, so left increase by mid plus 1. Okay, else the final condition, then the right is equal to mid minus 1. Okay, and the end of question is no one condition is satisfied, so return minus 1. So like the element is not present on this array. So now let's check it. So console log it, console.log binary search. So in this question we only give the sorted values. Okay, because they search binary using the break into
find the less element and greater than element. So we give the inputs only sorted. Okay, so we give the sorted input. Okay, now what we find, like we have to find 4 in which index. Okay, so let's run it. So they find the 4 is on the third index. Okay, like the indexing start is 0 base. Okay, the initial element is 0, 1, 2, 3. So there is one third. Okay, now we find another, like in 7 which index. They find that if we want fix the index, so this is correct. Like we give the other value that are not present in this, like 10. So they give -1. Okay, so now our code is completely working. So this is the question of binary search. Okay, now we follow another question. Searching question is linear search. Okay, in this question, to find the index of target in an unsorted array, like the linear search is also working on unsorted array also. So let's follow the linear search problem. No, search search dot gas search dot gas. In this question, we write the function of linear search. Linear search. In this also we pass a tag array and a target that we find. Okay, so now what we do? We use a for loop. Let initialize with 0 and length is equal to length of the array and increment the count. Okay, now what we do? We check every element is error I equal to target. So return curly, else return -1. So this is simple, like a for loop element. They linearly like one to one search every element. So now console log it. So they also find the unsorted value also. So we give unsorted value. Okay. Linear search. Wait here. One four. Okay. Now what we find? We find 4. Okay, the target is 4. So now let's run it. So they give the 4 is on the 1 index. Okay, like 0 base index with the 1 is present on 4. Okay. Now let's check 9. So they say 9 is present on the 5th index. So this is correct. So now give we another element that are not present in this index, like 10. Run it. So they give -1. Okay. So our code is properly working. So this is the another first question of they find unsorted also. Okay. So these two questions are from searching. Now we follow the sorting question. Like we follow the bubble sort question. Now they create a file name bubble sort .js. Okay. We write a function bubble sort pass array. In this we only like the ascending order of the array. So we don't need a target. We only take the array. Okay. Now let initialize array dot length. Okay. Now what we do? We apply a for loop. Let I is equal to 0. I less than n -1. I plus plus.
Now we take a for loop. Let j equal to 0 j less than n minus 1 minus I. Okay, and increment the j counter. Now what we do? We apply a condition if AR of j is less than AR of j minus 1 greater than minus 1. So what we do? We swap them in of j AR j plus 1 equals to AR of j plus 1 with AR of j. Okay, now finally return the array. Now let's console log it keeps working or not. Console dot log line bubble sort in which we give input. Okay, so we give a random value so that they can sort. Like that, machine. Okay, now let's run it's working or not. We done the code. Okay, like in this question we give double curly braces. That's why the problem is. Now let's run it. For our input is sort. For like our code is sort. So this is bubble sort approach to follow the sorting in ascending order in any type of order you can do. So now let's go. Now bubble sort is complete. Now we use the selection sort to sort the array in ascending order. Okay, we use selection sort. So to be writing we have selection sort go js and we clear all the inputs. Okay, function selection sort. In this also we pass only array with initial then is equal to array dot length and apply a for loop. Let initialize with 0, length is equal to n minus 1 I plus plus. Okay, now we initialize a min index, it's I, and another for loop, let j equal to I plus 1. Okay, let j less than 10, j less. Okay, in this we check the condition if AR of j is less than AR of min index. Okay, so min index equal to I. Okay, for it j. So this is one condition. Is min index not equal to I. So set with AR of I and min index. So AR of I and AR of min index equal to AR of min index as I. Okay, now let's return this. Return I. Now let's
कंसोल लॉग selection sort. In this we give inputs, random inputs. We don't give the duplicate element because sir, our logic is confused. Okay, sort is remaining. Okay, now let's run it. So you see the output. They sort in ascending order. Our selection sort algorithm. This is our selection algorithm that I'm mainly asked. So now let's solve the last problem is insertion sort to sort array ascending order. Okay, so is for the inference sort. What real the output? We write the function so in this also we pass array and first to find the length of the array. Okay, apply a loop for let I is equal to 0, I less than m, I plus initialize I 1. Okay, and set a key let we equal to as I. Okay, and then let j equal to I minus 12. We apply a while loop condition with j greater than or equal to 0 and then of here greater than a. Okay, in the we check as j plus 1 equal to as j. Okay, and decrement the j and error of j. We set the error of j plus 1 as equal to key and return error. Okay, now console of it log insertion source. We give random number. Now run it. So you see the output. This algorithm also solved our problem. I give the sort the array in ascending order. So this is तो आज हम करेंगे टॉप 5 सर्चिंग एंड फोर्टिंग क्वेश्चन जिसका पार्ट 2 वीडियो है। तो पहले हम फोर्स करेंगे मर्ज फोर्ट। हमें एक मर्ज फोर्ट इम्प्लीमेंट करना है कि जितने भी इंटेजर रहे वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड एंड कंक्यूर अप्रोच के द्वारा वो फोर्ट हो जाए। ओके, जैसे हमें इनपुट में रैंडम नंबर दिए जाएंगे और एट द आउटपुट आपको उनको सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ वी एस कोड में आ जाना है, फाइल का नाम देना है मर्ज फोर्ट डॉट जेएस। फिर यहाँ हम फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन मर्ज फोर्ट, इसमें हम अरे पास करेंगे। फिर कंडीशन चेक करेंगे इफ चार डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 देन रिटर्न AR। ओके, और फिर हम इसमें क्या करेंगे, एक मेड वेरिएबल बनाएंगे और उसको मैथ डॉट फ्लोर से, ताकि वो फ्लोट वैल्यू रिटर्न ना करे। हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके,
फिर हम उसका लेफ्ट फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट लेफ्ट, देन उसमें हम इसी को मर्ज फोल्डर कर देंगे। ये रिकर्सिव अप्रोच है, तो इसमें क्या करा हमने, इसी को फंक्शन को रन कर दिया, फिर इसमें मर्ज फोल्ड करेंगे और इसमें लेफ्ट को फ्लाइस करेंगे हम 0 से मिड तक। ओके, मर्जी की स्पेलिंग यहाँ थोड़ी रॉन्ग हो गई। ओके, नाउ हम राइट फाइंड करेंगे, कॉन्स्ट राइट इक्वल टू मर्ज सॉर्ट या टू फ्लाइस, देन ये इसका मिड। ओके, तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम एक और फंक्शन लिखें, अब हम इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न, इसमें हम एक और फंक्शन में इसको पास करेंगे, कॉस्ट लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू है, दोनों को हमने एक और मर्ज नाम के फंक्शन पास कर दिया। अब वो अगला फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन मर्ज देन लेफ्ट देन राइट। ओके, इसमें अब हमको क्या करना है, इसमें एक डिफॉल्ट बनाना है जिसमें हम स्टोर करेंगे वैल्यूज को। ये एक अरे है और एक वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे हम आई, और जे भी इनिशियलाइज करेंगे 0, दोनों ने 0 से इनिशियलाइज कर लिए। ओके, नाउ हम एक वाइल लूप की कंडीशन लगाएंगे, इफ आई लेस देन लेफ्ट डॉट लेंथ एन जे लेस देन राइट डॉट लेंथ। ओके, तो अगर दोनों अपनी लेंथ पे छोटे हुए हैं, तो जो लेफ्ट है वो अगर इफ लेफ्ट ऑफ आई इज लेस देन राइट ऑफ आई, सो इसको जो रिजल्ट में हम पुश कर देंगे, रिजल्ट डॉट पुश लेफ्ट वाले को, लेफ्ट ऑफ आई, और वो भी इंक्रीमेंट काउंट के साथ। ओके, और इसमें फिर हम एक एल्स कंडीशन लगाते हैं, एल्स रिजल्ट डॉट पुश राइट, वो भी जे प्लस प्लस कंडीशन के साथ। ओके, और फाइनली हम रिटर्न करते हैं रिजल्ट देन लेफ्ट डॉट फ्लाइस, हम आई की वैल्यू देंगे और इसको भी स्प्लिट कर देंगे, राइट को भी। इसमें हमारे 3 लगाना होता है, 3 डॉट्स, और इसको भी स्लाइस करेंगे और इसमें हम जे कर देंगे रिटर्न। ओके, तो हमारा फंक्शन तैयार हो गया। इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसमें इसका जो फंक्शन है रन करेंगे, मर्ज सॉर्ट, इसमें रैंडम वैल्यू देंगे 2 1 4 3 5 5 8 7। ओके, अब हम इस फंक्शन को रन करेंगे, हमको यहाँ पर भी रिटर्न में हमें मर्ज फंक्शन यूज करना है, ना कि मर्ज सॉर्ट का। ओके, हम रन करते हैं, आप देख सकते हो हमारा इनपुट सॉर्ट हो गया है। हमने इनपुट रैंडम नंबर दिए थे, आउटपुट में या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया है। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। हम फोर्स करेंगे इसको क्विक सॉर्ट टेक्निक से। इसमें हमारा क्या करना है, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम से इंटीजर को, जो लास्ट एलिमेंट है, तो पिवट एलिमेंट, उसको पार्टीशन करके उसको हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब सेम वही वाला करना है, लेकिन उसको डिफरेंट टेक्निक से करना है। तो हम चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्विक सॉर्ट से। तो चलो चलते हैं VS कोड में, एक फाइल बनाते हैं, क्विक सॉर्ट डॉट JS। ओके,
लेने हम। ओके, now हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्विक सॉर्ट। उसमें हमने क्या करा, अरे पास करा, और इस जो अरे की जो लेंथ है वो इसमें हमारे को छोटी रखनी है 1 से। ओके, अगर है तो रिटर्न कर देना आर ए आर, मतलब वो छोटा वेरिएबल है, मतलब सिंगल एलिमेंट है, तो उसको सॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हमारे को जो पिवट एलिमेंट है उसको लेना है, तो हमको पिवट एलिमेंट स्टोर कर लेते हैं। पिवट अरे, अरे डॉट लेंथ माइनस 1। पिवट एलिमेंट कौन सा है, हमारा लास्ट वाला एलिमेंट जो हमारे अरे का। ओके, अब हम बनाते हैं कॉन्स्ट लेफ्ट, जो कि एक अरे है, और राइट भी एक अरे है। अब हम क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से, आई को लेस देन करेंगे अरे की लेंथ के इक्वल। ओके, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, इफ ए आर ऑफ आई इफ लेस देन पिवट। ओके, सो लेफ्ट डॉट पुश ए आर ऑफ आई। ओके, हमको उसको लेफ्ट में पुश कर देना अगर वो छोटा है तो, और अगर वो बड़ा होगा तो ऑलरेडी एल्स कंडीशन आएगी, तो उसको कहाँ पर राइट में पुश कर देंगे, राइट ए आर ऑफ आई। ओके, और फाइनली हमें रिटर्न कर देना है, रिटर्न क्विक सॉर्ट, लेकिन इसको हम एक अरे में डिलीट करेंगे, उसकी दोनों वैल्यू, क्विक सॉर्ट लेफ्ट वाला, देन उसकी पिवट वैल्यू, देन क्विक सॉर्ट राइट। ओके, ना इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्विक क्विक सॉर्ट। इसमें भी हम रैंडम इनपुट देंगे, 3 6 5 5 8 7। ओके, ना इसको रन करते हैं। ओके, हमने कहीं पे क्या रॉन्ग करा, यहाँ पर एल्स राइट डॉट पुश। ओके, ओके, तो आप देखो आउटपुट देख सकते हो, हमने इनपुट में हमने रैंडम नंबर दिए, इसने इसको असेंडिंग ऑर्डर में फोर्ट कर दिया, तो हमारा क्विक फोर्ट एल्गोरिथम भी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो हमने मर्ज और क्विक फोर्ट दोनों इंप्लीमेंट कर लिए। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की और, जो है काउंट फोर्ट। ओके, तो इसको भी फॉलो करते हैं हम। इसमें हमें करना क्या है कि काउंट फोर्ट बनाना है, जो कि अरे के जितने भी इंटीजर्स रहेगा उनको असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी वही वर्क करेगा, लेकिन ये भी डिफरेंट टेक्निक है। ओके, तो इसको करते हैं हम, काउंट फोर्ट डॉट जेएस फंक्शन काउंट फोर्ट, हमको अरे पास कर देना। इस जो अरे की जो लेंथ है वो हमारी अगर 0 होगी तो हम ऑलरेडी उसको रिटर्न कर देंगे, खाली अरे रिटर्न कर देंगे। ओके, अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं मैक्स, और उसमें हम स्टोर करते हैं मैक्स वैल्यू जो भी अरे में है। ओके, अरे वो हमने अब स्प्रेड कर लिया। फिर काउंट वेरिएबल बनाते हैं, काउंट। ओके, इसको हम नया अरे है। ओके, अरे जिसकी जो वैल्यू है मैक्स के बराबर, मतलब जो मैक्स में जितने अरे थे उसके इक्वल है, उसको फिल किया है हमने 0 से। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक फोर लूप लगाते हैं, फोर लेट नम ऑफ अरे। उसमें क्या करेंगे हम,
जो काउंट है उसको नम से इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अब हम एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हमारा फोर्टेड वाला, जिसमें हम फोर्टेड वैल्यू हमारी स्टेट करेंगे। तो इसमें क्या करा, हमारे को सिंपल फोर लूप लगाना है। फोर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन काउंट डॉट लेंथ, और इसको भी इंक्रीमेंट कर देते हैं। ओके, अब इसमें हमारी मेन कंडीशन लगेंगी वाइल कंडीशन, वाइल काउंट इज द काउंट इज आई 0। ओके, व्हाट वी डू, sorted डॉट पुश आई। ओके, और फाइनली हमारे को sorted को रिटर्न कर देना है। अब उनको कंसोल लॉग करके देख लेना है ये वर्क कर रहा है इनका था। काउंट फोर, इसमें हमारे को इनपुट देना है हमारे रैंडम 2 1 4 3 4 3 6 5 7 6। क्या हमने 6 2 टाइम कर दिया हो क्या, कोई नहीं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो अभी अभी हमारा अरे क्या हो रहा है, खाली आ रहा है। तो हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे कोड में। न्यू अरे बनाया हमने, रिटर्न कर रहा है। लेंथ 0 मैक्स, हमको नम को इसके, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक करी, हमको नम को इसके बाद इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो आप देख सकते हो हमारा आउटपुट में जितने भी हैं सब असेंडिंग ऑर्डर में फोटो गए। हमने इनपुट में रैंडम नंबर दिए थे, तो ये हमारा अप्रोच भी हो गई है। अब हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को फाइंड करना है फाइंड द केथ लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, तो ये हमारे दो क्वेश्चन है, फाइंड के स्मॉल लार्जेस्ट और के स्मॉलेस्ट। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम, 9th क्वेश्चन है हमारा, फाइंड केथ स्मॉलेस्ट रूट जेस। इसमें जो हमारा फंक्शन रहेगा उसको हमको नाम क्या देना है, फाइंड के स्मॉलेस्ट। इसमें हमने अरे पास करा, के पास करा, और इसमें हमने कॉन्स्ट क्या करा, एक सॉर्टेड अरे बनाया। उसमें हमने हमारा अरे स्प्रेड करा, उसको सॉर्ट करा ए बी और देन ए माइनस बी। इससे क्या होगा, हमारा हमारा भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट सॉर्ट हो गया होगा। अब रिटर्न करेंगे, रिटर्न सॉर्टेड ये के माइनस 1। ओके, अब क्या करेंगे, हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब फाइंड स्मॉलेस्ट, अब इसमें हम अरे पास करेंगे सबसे तो। हम पास करते 1 2 3 4, हम रैंडम नंबर देते हैं शायद। ओके, अब इसमें एक हमें फाइंड करना है कि कौन से नंबर पे है वो। ओके, तो आप देखो जो हमने 4 सर्च करा, तो 4 हमारे कौन से नंबर है पर है, मतलब उसकी पावर के मामले में, कि जैसे कि के बाद आता है 4 टाइम्स के बाद आता है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, फोर्थ की, फोर्थ नंबर पे है। ओके, तो इसमें रन कर दिया। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो कि है हमारा केथ लार्जेस्ट। ओके, तो हम अभी सोल्व करते हैं। 10 फाइंड केथ लार्जेस्ट
.js, इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है। ये बिल्कुल सेम है, आपको जो पिछले वाला मैंने कोड था उससे सेम है, बस इसमें एक चेंज है फिर। ओके, मैं जैसे इसका कोड कॉपी करता हूँ, आपको बता दूंगा चेंज क्या है इसमें। जैसे मतलब पिछले वाले फंक्शन में सेम है, बस इसमें आप जब फोर्ट करोगे यहाँ आपको b-a करना है। ओके, ए माइनस बी लीजिएगा, b-a। ओके, अब आप प्रिंट करोगे तो जो इसकी पावर है 5 है, मतलब पीछे से सॉर्ट हो रहा है। ओके, पीछे से चेक कर रहा है उसकी पावर कितनी है। जैसे आप अगर पीछे से सर्च करोगे तो अब इसकी हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम है फाइंड के लार्जेस्ट। ओके, सो ये थे हमारे क्वेश्चन जो आज हमने फॉलो करे, जिसमें हमने पहले मर्ज सॉर्ट, फिर क्विक सॉर्ट, फिर काउंट सॉर्ट करा, फिर हमने फाइंड उसकी लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों फाइंड करनी। तो आप सर्चिंग सॉर्टिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये क्वेश्चन को और अच्छे प्रैक्टिस करना। और आपको इसी तरह के और डीएसए वीडियो चाहिए तो कोडिंग फोल्डर को सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।